distinguished guests, and the esteemed participants. A warm welcome to the ISAM sponsored 2-day FITI-RI workshop on academic courses on social awareness and intervention. We are delighted to have you here at the prestigious Merit Bhopal. This event is collaboratively organized by the Rolta Incubation Center, Merit Bhopal, and the Indian Society for Applied Mechanics, ISAM. Brings together a dedicated community of scholars, researchers, engineers and students. Through its commitment to knowledge dissemination, ISAM organizes impactful national level conferences and workshops fostering collaboration and innovation across various institutes. An unwavering dedication to academic excellence. Merit remains a beacon of knowledge and progress. Rolta Incubation Center, a powerhouse of innovation and entrepreneurship, and transforming technical knowledge into tangible solutions. Through its invaluable resources, mentorship initiatives for technical interventions in rural India, FITRI workshop on academic course on social awareness and intervention. This is organizing by Rolta Incubation Center and Indian Society for Applied Mechanics. Our goal is to inspire faculty members to impart knowledge and administer courses that resonate with the workshop's theme. Expertise, which means for encouraging faculty members to share their expertise and collaborate in identifying or solving social problems through innovative approaches. Secondly, implementation of solutions, for facilitating the implementation of solutions in real social settings, emphasizing practical application faced by rural communities. The initiative focuses on promoting rural. ISAM is not-for-profit society which comprises academicians, researchers, engineers and students working in the field of applied mechanics. Through periodic discussion meetings, conferences at the national level time to time. ISAM focuses on rural technology, sustainable product development, frugal innovation and social entrepreneurship. The workshop aims to bridge the gap between academia and practical applications in the context of rural India. Now I would like to call the chairman. Thank you everyone. I welcome all the guests to please come forward and please light them in the house. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. Chairman of Rolta Incubation Center, to share their insight with us. On behalf of organizing committee, I warmly welcome Professor G. Dixit, in-charge Director Mining and Dean Planning Development, as a chief guest, and Professor S.P.S. Rajput, sir, our Dean ID, as a guest of honor, then Professor Lakshmana Rao, sir, Professor IIT Madras, as the President, Indian Society of Applied Mechanics, ISAM, and the guest speakers, Professor Anand Rao, sir, from IIT Mumbai, Professor Abhijit Pandey, sir, Deshpande from IIT Madras, Dr. D. Nagesh from Triple X faculty, Triple IIT, Shri City, and IIT
Madras alumni and social worker, Professor Atias, Professor Tulkashu, IIT, NIT Jamshedpur, Aman, Dr. Aman from IIT Indore, Dr. Iladar from NIT Delhi, and many more participants are guests available, sitting here with us, and our colleague, faculty members, students, research scholars, MTech scholars, and dear BTech students. So, I would like to introduce you about the workshop. I would like to mention Mr. Sharat Kumre Saab, social worker, and Dr. Pushpendra Yadav is here as a UK coordinator. So then I would like to introduce you about the workshop. This workshop is jointly organizing by Rolta Incubation Center, Bandit Bhopal, and Indian Society of Applied Mechanics. This two-day FITRI workshop is sponsored by ISAM, Indian Society of Applied Mechanics, and Social and Science and Engineering Research Board, SERB. The goal of the workshop is to develop the course identifying and solving social problems more specific to the rural areas. The workshop objective is to motivate faculty members in the area of rural technology and social development. This workshop will also develop understanding among students about the identification of the social issues of rural areas and ways to solve them. The theme of the workshops are rural technology, rural livelihood, frugal innovation, green energy, rural energy, social entrepreneurship, sustainable product development, grassroots creativity, social enterprising, ancient Indian technology, and so on. I just give you a brief about our Rolta Incubation Center. That the Rolta Incubation Center fosters a culture of innovation-driven social entrepreneurship and supports technology knowledge and innovation-based startups. It serves as a platform for rapid commercialization of technology developed by startup founders, building a vibrant startup ecosystem through collaboration with academia, financial institutes, industries, and government departments. Presently, we have 19 startups are registered in the center, and we are giving 50,000 rupees as a seed grant to startups, those who are incubated in our centers. Center is also organizing annual entrepreneurship fest, e-summit every year. We have startups which are related with the social enterprising. One is startup Physics Lovers, who is teaching JEE, preparing for the JEE Foundation, JEE preparation in just 50 rupees per month to the rural people. One of the startup, with Mr. Vardhaman Soni, with the founder is Vardhaman Soni, who is with us right now. He is doing the organic agriculturing activities. Maybe Vardhaman, you can highlight all those things in a better way. From there only, you can say something about it. I'm passed out from 2021 mechanical batch. We have a startup in Katyani Organics, which I am in it from last 4 years. I incubated in second year in Rolta Incubation Center, and after that my journey was a roller coaster. Today we are serving over 3 lakh farmers. We are supplying all the D2C products like organic fertilizers, pesticides, and fungicides directly to the farmers through our organic online portal krishisevakendra.in. Today we have a team size of 90 people, and we are serving over 1,500 orders per day, and I thank Sir for his moral support and availability all the times. All the products just include biofertilizers, biopesticides, and all the products which a farmer needs. In the supply chain, I first encountered this gap in my second year, in which most of the farmers were using the products. These products which that through a various high supply chain. We have a lot of distributors, retailers in between the supply chain, but we as a startup are disrupting the supply chain and directly connecting the farmer to the factory. Social worker, he helped us to identify the village, and he just mingle with the villagers, how to mingle with them, how to identify the social issues. He instrumental those things very well. Thank you, Sharat sir, for your kind support.
And Mr. Batham is also with us, who is the retired bank person, Union Bank of India, retired bank manager. He is also a social worker working with the Jhiri area, Jhiri village area only. So he will also support it and identifying the villagers, and we met 2 or 3 times to them, have some drive over there, and now we are going after the sessions, formal sessions, village, to meet the villagers and then identify their problems and discuss with them how to solve, how to work on this. I am sure that this workshop in India social problems and provide a feasible solutions. Thank you very much. Now I would like to call Dean ID Dr. SPS Rajput sir to say a few words. Respected Professor Dikshit, our Dean P&RG and in charge director for this today workshop, Professor C. Lakshman Rao, President of Indian Society of Applied Mechanics, other guests who came from the different IITs, NITs, experts and dear participants. Indian Society of Applied Mechanics basically taken this initiative to intervene the technological aspects for the rural development. Basically, in India, normally we claim 70% of the population are residing in the villages, and our economy is also based over the agriculture. On one hand, and on the another hand, we are having tremendous technological innovations from the different organizations, different research boards, from this SERB, Indian Society of Applied Mechanics. So, when I came to know from the chairman of the Rolta Incubation Center, Professor Akhilesh Barbe, that such type of program we are going to organize in this Merit campus and here as a venue of this, I was very much happy that some societies, some organizations have taken this initiative, and the Merit is one of the part of that initiative. Normally, intervention is one of the novel cause to increase the lifestyle, their agriculture yield, their drainage water system, their drinking water system, their financial management, persons, those who are residing in the villages. And basically, some of the villages have already been developed in the different states, but still, some of the villages are in the very, very rural areas. It is quite difficult to reach there for any of the cause. So, on behalf of the Institute, I welcome Professor C. Lakshman Rao and the different guests, experts, those who are working and those who are planning to intervene in the rural technologies to enhance the betterment of our villages. Our coordinator of the Rolta Incubation Center, Professor Akhilesh Barbe, and the coordinators of this workshop, Professor Binod Yadav and Deepak. I congratulate them and thank you very much. Inaugural function of the workshop on academic course on social awareness and intervention, dedicated to fostering the frugal initiative for technical intervention in rural India. Today marks the beginning of a transformative journey on that intervening academic with the critical need of our society. The objective of this workshop is very clear: to inspire and empower our faculty members to champion courses that align with the very essence of social awareness and technical intervention. We stand here today not just to endeavor educator, but an architect of change, recognizing the pivotal role of education played in shaping a more equitable and empowered society. In our pursuit of academic excellence, we must not forget our responsibility towards our community, especially those in rural India. Through this workshop, we aim to ignite a passion within our faculty member, a passion to delve into the intricate fabric of social challenges and equip our students with the knowledge and tools to address them. The heart of this workshop lies in motivation, a motivation to impart knowledge and transcend textbook and classroom
that resonate deeply with the real need of our society. It's about nurturing a mindset that embraces frugal yet effective technical intervention, knowledge and resource constraint facing in rural areas, and championing solutions that are innovative and sustainable. We envision our campus and institution as a hub of not just academic learning, but as incubator for social change. For integrating courses that focus on social awareness and intervention, we aim to bridge the gap between theory and practice, cultivating a generation of students equipped to tackle real-world problems. I extend my sincere appreciation to all the participants, speakers and organizers who have contributed their time and expertise to make this workshop a reality. Together, let us embark on this journey, empowering our faculty members to weave social consciousness into the very fabric of our academic endeavors. Thank you, and let's pave the way for a future where education becomes a catalyst for holistic social transformation. Thank you. Jai Hind. President of the Indian Society for Applied Mechanics ISAM and a distinguished member of the faculty at IIT Madras, Professor C. Lakshmana Rao, for inaugural talk on the importance of academic course on social awareness and intervention. I'm very happy to be here to participate in this inaugural function of this workshop. It was a long journey for many of us who have been dreaming about this. In fact, I would say that we, the working group, were trying to work on this workshop. We approached at least 4 IITs and 3 NITs and got rejects, and finally we got an acceptance from a Manet on this idea. So, we are very thankful to Professor Shukla, who immediately put us in touch with a team, and they were very passionately working on this for the past few days, past few weeks and so on. And I think there is something that will come out of it which we should consolidate. These are of different challenges compared to the challenges that you face in defense or in space or many other sectors. Perhaps we are trained much more in solving those problems, but we are not as well trained in identifying or even innovating solutions for many of the problems in the hinterland. And that is where, and this story has been there for a long time. Different institutions were working on this at different scales and at different times, in small pockets and in various ways. But we thought that a society like the Indian society should also take up this cause, and because there is no other society which takes up this cause. When Society of Mechanical Engineers will be focusing on the fashionable topics in mechanical engineering at that time, or maybe Society of Electrical Engineers will be taking what is identified as important things in those areas. And if at all these things will come as peripheral things and not given right importance. So from a society point of view, we thought that we should take up this cause, and there was a good resonance to this idea in the society discussions. So we held a pilot workshop on these themes in Sevagram, then we followed it up with something in Jamshedpur when we had something on frugal initiatives, and then we formed a working committee which came up with these recommendations, and what we are doing now is a first scale of implementation of those recommendations. So while writing to the various IITs, I prepared a small video which I think summarizes what we were trying to do. So I request them to play that video for 5 minutes, and then I'll conclude. Formed by the Indian Society of Applied Mechanics, and members of this group myself, Stephen from IIT, also from IIT Madras, who is also in charge of two-track activities at IIT Madras, and Sri Rama, who is a social worker currently based in China. So this is a background to the reason why we started this initiative. Is
and to share these activities through sessions on special issues and so on. So that's the background. A few activities are going on in a few parts of the country, but there's a need for doing this across the country and also to give it a more research base. So just as an introduction to the Indian Society for Applied Mechanics, it's a society that is based in different parts of the country, where we have academicians, people from industry, as well as research scientists who are active. Focus has been primarily on applying the tools of experimentation, analytical simulations and design on various issues that are related to development. We say that we can help in conducting training workshops for faculty to offer specialized courses on the broad topic of frugal initiatives in rural India, and we know that a course is something that can really motivate a lot of students, and faculty also need to be trained in offering such courses. A few courses exist across the country, we can get expertise from there and train many others who can offer similar courses. And the second, planning to also train people to write sporadic way, assuming that people can easily identify needs, but we hope that this training workshop will help in writing relevant and holistic proposals by faculty. Of course, we can also help in initiating. Good afternoon. Welcome to this short presentation of Frugal Initiative. A teaching and a training on these aspects is also important, and that is where I think we need to do. I mean, it's nice to see Vardhaman starting a startup and doing this, and if we had taught a course on these issues, perhaps there would have been not one Vardhaman, but there would be at least about half a dozen Vardhamans who are coming out with such initiatives. So there is definitely an inspirational role that we should do as academicians on these topics. And there is something that Nagesh, who will speak to us later, will relate of the role of a course called Technology and Development that he took more than 30 years ago, which has inspired him to take up many of these things on rural things, and even though he traveled everywhere else, he came back to this in some way. And so, and things might have changed from then to now. What is important there is not relevant now, but there is definitely a challenge today which is different from the type of challenge that we have. We talk tomorrow. He will also tell how his own course, which has inspired a few people to take up. And when faculty try to teach this course, it's not going to be easy to start with, unless some push or some encouragement is given from academicians. So this activity, I will define it as a sattvic activity, a sattvic sukham, which I quote from Bhagavad Gita, yat tadagre amrutopam vishamiva pariname tad amrutopam. Initially it will be hard, it will be like a visha, it will be like a poison, but slowly as it transforms, it will become some sort of a nectar which will start enjoying. So the examples that I have of Trilochan Sastri or even Narti, etc., they started like that. They took it up out of enthusiasm in spite of 2 courses that they may have to take at that time and so on. But slowly, because of their passion, they are able to develop these courses. And after 10 years, some students come back and say that, look, what you showed me at that time was very useful, and it helped me to take up this initiative and so on. So that inspirational role we have as educators, and I hope many people who come to this workshop will be able to pick up ideas from here and to help do such courses in their own campuses. And it's not going to be easy, and this will help you when you choose to start such courses in your own campuses. So that's, I hope we will learn a lot from many experts who are going to come here, going to talk to us in the next few days, and take back very good recommendations of how we can implement similar ideas in future. Thank you very much for being here, and let us hope we'll have a fruitful discussion and active engagement in the next 2 days. Thank you.
Problem like in rural area, the communication is really and when we use कर रहे हैं जिस type of point अपना local या biosphere then बहुत effective नहीं कर रहा है हाँ नहीं उसका considerations very easy to Nagesh is here. His wife is also involved in the Professor at the Center for Technology Alternatives for Rural Areas at the IIT Bombay, India. He is also associated with the interdisciplinary program in climate studies and the ISAM Center for Welcome, sir. Why they have come to attend this workshop, what they want out of the workshop. I request everybody to speak or please introduce yourself and tell us briefly why you are here. That's all. I am faculty in electrical engineering department. Basically, I am working on the solar system and TEG thermoelectric generators and environmental things, IoT application in agriculture and the electronic circuitry. So I find that in social services or social causes, these technologies can be benefited. That's why I am here to interact all of you. Good morning to all. I am Dr. Kevin Surendra from IIT Palakkad. I am a faculty over there. My research area broadly is solid mechanics and fracture mechanics. So I am here as a representative from IIT Palakkad. I am supposed to carry all the learnings here to the IIT Palakkad so that how much we can participate, we can be part of this Fitri workshop and the activities. Thank you. Good morning everyone. I am Sri Krishna Susamsu, Assistant Professor in IIT Jamshedpur. I have been following this FITIRI initiative since its inception in ISAM. So I have been always interested in looking into how these things will go on, and hopefully I want to start some course in IIT Jamshedpur. Faculty member from IIT Madras. I am involved in Rural Technology Action Group at IIT Madras. So my interest in this workshop is to learn about the formal coursework and how to propagate these ideas at various others. My research area, I am faculty from Chemical Engineering Department, many, and my research area is in heat transfer, and I am here to learn how this heat transfer research, whatever we are doing, how we can implement in rural areas. So, for that, thank you. Morning to all of you. Myself, Ritik Jain, and I am a participant for Fitri from as I am an MTech chef from Merit, working on means my specialization is industrial engineering and management. Thank you. Coordinator at Merit Bhopal, and I am here to learn what other institutes are doing and how the objectives of NEP can have a fusion with what we wish to do for the rural areas. Dr. Deepak Kumar, currently organizing this workshop. So I do research in the area of applied mechanics, and I'm also learning how this applied mechanics research can be utilized for the livelihood enhancement for the rural people. Thank you very much. Hello, good morning everyone. Myself Dr. Leela Nandri, Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering and IIT Delhi. I joined this program because of when I see this brochure of this particular program, so I become very happy because this course is related to the social awareness and intervention, and particularly I am here to know about the key ideas, and a lot of useful information from the keynote speakers, and I will see how we can implement
the key ideas in rural areas and what will be our approaches. So so overall how I will be able to collect the ideas from the keynote speakers and would like to implement in our rural areas, and will I would like to convey this information with our students, faculty member in my institute also. So this is very a good opportunity for me, as I have seen so many outstanding legendary persons are here. So I am very excited to learn so many things from this workshop. So thank you very much for giving me this opportunity to be here. Thank you, sir. Good morning to all. Myself, Dr. Amin Khurana. I have recently joined IIT Indore as an assistant professor in mechanical engineering department. And prior to that, I have done my MTech from NIT Lawan under Professor K.K. Shukla sir. So I am familiar with all such type of activities. He is one of the active person involved in all such activities. And I am also very excited to learn different perspective here, which is associated with the social problem that the common villagers will face. And I will try to learn from here and try to develop some coursework, as being said here, so that I can implement in our institute also. And it will be really a great opportunity for me to learn. Thank you very much. I am Lakshman, and my other things you have seen, but basically on technical things I work on material modeling, impact mechanics, and in the recent past as an application of impact mechanics, I've been working on impact of fluids on human surfaces in processes like Shirodhara in Ayurveda. So, I am Vijay Bhaskar. I am Managing Trustee of Bharat Raksha Vasudha Foundation. I work for CSR initiative, Grameen Ayurveda project of IIT Chennai. We want to integrate technology into villages. At the same time, we want to work for Ayurvedic medicine, indigenous medical system in villages. That's what for the past 2-3 years we are working. From IIT Madras. So my interest is in using IT in villages, especially mapping. So when teaching at Triple City, I was teaching a course on how to motivate students to this, because I was motivated during my BTech days through similar courses. Now I am working with IITM faculty on making an NPTEL course out of it, doing capacity building workshops for NGO staff, etc. I'll share those tomorrow morning. Everybody, I am Sarah Singh Kumre, I am social activist. I was district manager in industries department, but my sister was in CRPF. She died, she killed 4 terrorists. Then I left my job and I promised to live for country and our society. And I am working for many things. So we can come to afterwards. But I am very happy to know that you people are, you want to do something for rural India. So that is a very good opportunity for our young generation, and we want to make ideal village, digital village. Actually, I already started, and I thank Dr. Deepak, Dr. Deshbarve and Dr. Yadav. They have given just good opportunity, and I thank Dr. Director Sir, Director Shukla also. Actually, see, we are having very good brain, but we should be positive. And if you have good brain and if you are not positive, then what we can do, you can know. But here I am very happy that everybody are very positive and they are kind-hearted. That will be very nice for our Jiri village, and I support you without condition. Though I remain busy in other activities also, but I support you. Patham sir is there. Thank you, sir, all of you. I am Ratanlal Patham, ex-bank officer, Union Bank of India. I have got a good experience throughout the state in Madhya Pradesh and Chhattisgarh during my tenure, and I am working since 2000 and before that also in these village areas, and where the forest and the tribal and the down children are living, and they are having a very good capacity and learning intellectuality in the childhood itself, and for that also I am teaching them some idioms and phrases, 4, 5, 10, 20, books are the best friend, knowledge is power, hard work is the key of success, like this. And I am uploading on videos for those children also.
then you can make a child anything. A very good team. Sharad Kumreji introduced me. I am thankful to Sharadji and all of you, those who are taking very good interest for the upliftment of our community. यानी कि भारतीयता का जो आप लोगों ने एहसास किया है, उस भारतीयता में हमारे ग्रामीण लोग उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये जंगल और पहाड़ क्षेत्र में जो मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, आई एम रत्न विशेषज्ञ आल्सो, डायमंड स्पेशलिस्ट इंडस्ट्री, माइंड टू मार्केट आल्सो आई हैव ए गुड एक्सपीरियंस in during banking also I have rural developmental experience, so we will get together and we will do with our right best. Thank you. I'm Vinod Yadav, assistant professor at Mane Bhopal. My research area includes solid mechanics. I want to learn from this workshop for the betterment of rural peoples through technology, and also to develop a course, academic course to run the at Mane Bhopal on rural technology. Thank you. So, are there any other participants who would like to introduce? I know this is a rural development program for faculties who want to appreciate to teaching work. A student for rural development. So my name is Muthopi. I am a student of mechanical engineering department. Industrial engineering and management, and I learned to how to increase the knowledge of rural area. Thank you, sir. I am Anand Shankarati from IIT ISAM, assistant professor in Department of Electrical Engineering. I am associated with the Center of Societal Mission there. So thereby I came here to discuss about the course what we offer there as a social entrepreneurship. We are running slightly, I think, late, so I try to catch up on time so that we can go to the village, which is I think one of the most interesting and important part of the program for the day. So if I am exceeding my time, please let me know and I will prepare accordingly. So as introduced, I come from Sitara, Center for Technology Alternatives for Rural Areas, which is an independent academic center within IIT Bombay. So first of all, let me acknowledge and thank the hosts, Dr. Akhilesh, Dr. Vinod and Dr. Deepak, who have been taking care of us since yesterday for all the arrangements and for this invitation to discuss about Sitara's experience and Sitara's journey in this field of technology and development, which I will talk about. Of course, I will acknowledge my research collaborators, colleagues at Sitara and all of you who have gathered here to listen to this. But we started our academic programs only since 2007. So this is a snapshot view of the brief journey of Sitara. So on the right side you see the photo of our first head, Professor Anil Date, who was a professor in some of these activities, and some basic lab infrastructure workshop was initiated around that time. And then although there was an effort made to begin an academic program, it took a long time for IIT Bombay even to accept and Senate formally agreed. So I joined Sitara in 2006 as the first faculty appointee in Sitara. So till then we did not have faculty appointments, there were only research scientist positions. And then in 2007 we could convince the institute and we could start the first interdisciplinary program in Sitara, that is called MTech in Technology and Development, which I talk about in a few minutes. And then over the period of time the program has grown, it has stabilized, it has grown. And then we have been also able to get some fellowships to add to the existing pool of students, which is supported by the Ministry of Education, earlier MHRD. And then newer initiatives have started in, we are regularly getting some international visitors or interns who
who wants to, they want to do some kind of field work or field assessment, and we have been happily hosting them in those initiatives as well. And recently we have started another master's program called MDP, which I'll briefly talk about later. So just to give you an idea about Sitara, so all of you know IITs and NITs, these are premium institutes where technology research happens, and it is mostly from an ivory tower, I would say. So most of the research happens in the lab. But the distinguishing feature of center like Sitara is basically the interdisciplinarity in the approach. We believe that no problem is only a mechanical, chemical or electrical engineering problem. And the problem is a problem and we have to find a solution. So whoever needs to join hands, whatever expertise needs to be gathered, that we have to do. And then one of the important aspects of understanding the problem and then tackling the problem is first of all detailed need assessment and problem definition. And in that, interacting with the stakeholders, and especially in case of rural areas, it may be the NGOs which are working on the ground, it may be villagers, it may be Gram Panchayat. So that part is very, very critical. So as Professor Date, our founding head, used to say, we try to celebrate development through technology. So technology is only used as a mean. Technology is not an end. Okay, so it is not like we have to enforce technology. So maybe some of the problems may not need technological intervention. So that assessment or that judgment is also very critical, because we always see that some of the problems in the society are actually generated because of wrong way of implementing technology. So we have to be very careful. Although we are from institutes of technology, we have to see what role technology can play in this whole societal development. So that is very important. So our focus has been on the earlier time, it was mainly looking at the regional needs and local resources, and that continues to be there. And a lot of emphasis on experiential learning. So we have to go to the field, we encourage our students also to do that very much. So this is the kind of a backdrop of the context of the country today. So we are kind of following the paradigm of development, which is kind of characterized by what is accepted definition of development globally. Okay, so typically it is synonymous with economic growth. But is it all that we want to achieve? Because currently we see industrialization, urbanization and consumption. So these are the three mantras on which our growth paradigm is dependent on. And what it essentially is leading to is only unidirectional flow of resources. So we know that we extract resources from nature, we manufacture things, we advertise and sell them, and we encourage consumers to consume, and then there is the end of life, and then we have to deal with huge piles of waste. So that is what now it is very fashionable. We started talking about circular economy. We want to have more sustainability in all these consumption approaches. But what it has led, especially in the last few decades, is this rapid 5%, 7%, 10%. We want to become 5 trillion economy. But the other aspect of that, or other phase of that, is that there is an increasing disparity between what we call as India, which mostly lives in cities and metros, and Bharat, which lives in the villages. So this gap is widening day by day. Okay? And then only when we go to the villages, we realize how difficult the situation is, where the villages are dying, people are mostly migrating in the off-agricultural season to nearby urban areas. And then there is no way that we can continue in a society like this, where the cities are overburdened. Whatever amount of infrastructure that you create, it is not going to be enough for the cities also, because there is constant influx. I mean, Mumbai city is a prime example. I mean, every day trains of people are added in the city. And then none of the planning of any kind of facilities is going to be enough unless we have our rural areas self-sufficient and people can continue to live there. So in all this backdrop, we have to critically look at what is the role of technology. So is technology part of solution or part of problem? So we believe that technology solves all the problems. That is what typically technocrats and researchers in technology fields believe that. But then we have to consciously look at that. What are the externalities of technology? We have to understand them very clearly. And that's why there is an urgent need to look at and work on the interface between technology and development. Okay? Because currently it is kind of a complete bifurcation. Those who are working in the field of technology, technocrats, they don't understand what are the ground realities and what are the needs. And those who are working in the development sector, they often don't
know what technology can offer. Either they feel that technology will solve all the problems, or they don't know anything about capabilities of technology. So we have to bridge this gap and work on this interface. And that's why we offered this specialization called technology and development. And we did a lot of emphasis on that and which connects these two. So this intake specialization that we are offering, it is not technology development. So technology development, all the departments are doing. But what we are trying to do is connect technology with development, which is a very wider concept. And there are so many definitions of what is development, and each of us may have our own notion of what is development. Now we are more passionate to talk about sustainable development, not just development. But one way to look at it is basically a process where we try to encourage more of freedom to all the individuals. And secondly, it widens the choices people have in terms of that they want to live. So typically there is a drastic difference between what we see is life in the urban areas and rural areas. So in the urban areas, there are plenty of choices in terms of how we want to travel, what we want to eat, what we want to wear. When we go to rural areas, there is no such choice. And you have probably no roads or no transportation, no public transport, and no water supply. So there is very limited kind of avenues that are available. So the whole process of development essentially triggers having a wider menu of choices for people, which also entails empowerment and having more freedom. So what we are trying to do is connect these technology with development to this program, where we hope that we can train young engineers and technocrats to work on this interface between technology and development, to cover some of the coursework. But one of the emphasis is given, as I said, in terms of field exposure and field work. So every theoretical course that we have, it has an associated field with it. So if you are teaching water resources, then there is a visit to the area where some judgment mission or some scheme is being implemented, how it is designed, what are the issues, what are the stakeholders' perspective in terms of, and similarly energy, agriculture. So every course has a field visit. So that is one of the important part of the integral part of the coursework. And then this is the only MTech program which emphasizes that our students spend 9 weeks in a village, and I'll talk about that more next. And then all our dissertation or MTech theses are also field oriented. This is the kind of a course structure at a glance that I can say. There are these 4 types of courses that we have included in terms of the perspective courses, sectoral courses. I'll explain what I mean by that. So the core courses are basically laying the foundation of this program, and then the field exposure is basically very important to understand the ground reality. So then they also do some electives, because everyone has their background and some pathway that they want to pursue. So to build in some flexibility, they have some electives as well, and then they finally do independent project work. So just to give examples of 4 buckets that I have talked about: perspective, skill courses, and knowledge courses. So we have a course, for example, on development theory. What is exactly, how do we define development? And there have been various intellectual works in terms of to define development itself. And now we always talk about SDGs, but earlier it was MDGs, and there has been some legacy in terms of how to define development as such. Now there are also people who say, rather than that, we should talk about happiness index rather than development index. Okay, HDI was also a very popular concept. So there have been a lot of theories evolving in this. So you have to understand what development means when you are entering into the field of development professionals. And then what is the linkage between technology, society, and development? So there is a dedicated course which was also earlier in the earlier avatar, it was for appropriate technology, but over a period of time the expanse has been made to, and we have transformed the course which talks about more in terms of linkages between technology, society, and development. And then public policy and governance. They should also understand the policy aspects and governance issues in the dealing with technology and development. So this is called Mastering Development Practice. As I said, it is currently open to those who have a degree, 4-year degree in engineering, technology, planning, or architecture. And then the critical part is they have a field experience of at least 2 years. So apart from that, we also anchor the RUTAC activities at IIT Bombay, as was mentioned earlier. So these are in 7 or 8 different IITs, these cells are there, and IIT Bombay has been engaged since 2010 in this initiative.
other outreach kind of activities we are engaged in. Of course, center like Sitara is very critical in IIT Bombay. Mr. Abhijit was involved in, recently we had an institute-wide review of various departments and centers. So, we are critical in the sense whenever there is a question from the parliament, what is IIT doing for the society? So then all those questions are sent to only one center, that is Sitara. Although there are 750 faculty members, only 10 of us are supposed to answer that what IIT is doing for society. So it is more or less kind of a CSR unit of IIT Bombay, but we believe that we are not just a service organization, we are academic program and we do get good students in our PhD and MA program as well. And then, but we... So sorry to interrupt you. So 11:30 we are in short of time, so just last thank you. So we also encourage activities and some of our alumni have taken up initiatives mostly in the agricultural, agro-processing, that kind of a space. And just to conclude, I would say there is a need to work on the interface of technology and development. And this is very much relevant to the field that we are operating. It's not just the awareness that we have to work on, but how to make an intervention that is also very, very important. And then opportunities, there are ample opportunities in the academic program. In the even the conventional courses that we are teaching in mechanical or civil engineering, we can try to bring in this aspect how the students can do some hands-on activities and get engaged in society. And the new education policy can foster this further. And then working with people, trying to understand the needs is very, very important. So with that, I will conclude. So thank you so much. Sorry if I stayed. Can give to some young faculty who is interested in these things and want to start something in their own institute. And we can't wait for for a group to settle after 15 years or 35 years. We want to do something immediately. And one of your Sitara has not focused itself in this direction. And maybe IIT Dhanbad has done something which we'll see next time. And maybe towards the end of the workshop, we should see how we can even tap the undergrads. I mean, this may be a simple thing of how we can motivate them. And advanced courses will be the type that you have developed. Obviously, once more faculty get involved, that will also happen. I hope we'll generate some ideas. Very valid point, and we are working. Visited for this course especially, for placement. If you have done this course, then we will take you, otherwise we will not take you. You have given very good data, all are placed, 100% placement. Actually, the statistics is, IIT Bombay has 100% placement. So whatever course there is, Yahoo, Google, everything will come and they will play. So, how many companies have visited only for this course? If you have degree in this course, then only you will get. So, over the years, what I have mentioned that we are also not happy that our students go to .coms, frankly speaking. After 2 years of training in this, if we lose them to finance and some other sectors like Shadi.com, Yahoo.com, that is not they are actually trained for. But then their overall skill set makes them eligible to appear for these. But then what we have started from the last few years, that before the formal placement happens, we hold one event called Development Dialogue. So where we invite all the potential employers in the social sector. So they are both CSRs of various companies and the NGOs which are willing to hire students from our. So every year we hold it in October. So it is before the placement. And then all the students present their background and work, and the companies present their profiles. And if there is any kind of a matchmaking that is happening, then they come formally through our placements. And then that is the mode that we are encouraging, and some of our students have got placed through that mode also. But then currently, as you rightly said, many of these companies are not specifically coming from Sitara, except few agencies like BIOS, for example, or CEW. So there are some think tanks and some of these large organizations which come for Sitara students only. But then many of these companies don't mind looking at Sitara students, especially they are very restrictive about other disciplines and their specialization, but Sitara they are slightly more open.
because they understand that the Sitara students have that ground experience which is very, very valuable these days. They have those insights, and they are also doing some courses in data analysis which are again catching up very fast. So that helps them to get good placements. We have to force them to go and contribute to the society, and once you get the training certificate, you have contributed to the society, then only will allow you to placement. Then they will contribute better. It will require major paradigm shift, but we keep on warning our students when they go to the field for 2 months that they are not there to solve any problem. So they are going as students to understand. Okay, so that approach is very, very critical. We feel that, I mean, we are from the Institute of Technology, we can go and give gyan to anybody and we can solve their problem, but that is the other way around. We have to go and understand and learn from them. So it is very, very unreasonable to say that, okay, so we can just send all our students for 2 months in a village and they will solve all the problems of the villages. So that is, I think, it will require a lot of training, lot of preparation for them to go to the field before they are sent to field like that. So I would say that that kind of approach may not be working well because this humility and approach is very, very important. How you go to the field and try to learn from people rather than having this kind of a very arrogant approach that I am coming from IIT, I know everything and then I will solve the problem. So that is very, very non-working approach, I would say. To one village and they identify some problem and they will come back and, for example, they have something solution strategy problem. Some of the problems are very common in all the other villages as well. So it's like some identified problem and solution are parallelly implemented in other villages also, is it? Or second thing is like some villages have different problems. So my thing I want to ask, like certain strategies are problems are common in other villages. So the students, like other students, they will go for there, or some faculty members try to see that other villages have the same problem, we can implement that strategy there. So yeah, sometimes it is possible because there are issues which are similar across different domains, or in a cluster of villages it can be replicated. So many times whatever study that they do in the village, it helps the local agency either to form a funding proposal to various agencies to implement the project. Sometimes their work is in the domain of kind of a verification of the impact of what has been the intervention that the NGO is doing, how it has impacted, because it is like a third party which is coming and looking at it. So the work that they do is of various kinds, but it has helped the local agency in a variety of ways, both to understand how relevant their interventions are, and then how they can design new interventions, understanding the local resources and local aspirations. So sometimes it is, yes, that is the case that we can replicate it in different areas, but many times it is the experience that every village and every context is very, very unique. There are local factors which are more important than very general factors. So some local intervention has to be designed. Nikhil Bharat Shiksha Parishad, NBSP, Government of India, a chartered engineer in electrical engineering and an expert member of Shastri Indo-Canadian Institute. He is a member of the IEEE Move India Technology Committee of DART, Disaster Assistance and Recovery Team. He has authored and co-authored 33 research publications and technical journal, conferences, proceedings and book chapters, and published 34 Australian innovation patent and 1 German patent. For a talk. This social entrepreneurship. So one thing is missing here, that I am also a member of the Center of Society and Mission, for which I am invited here. So these are the two main NGOs. These two NGOs are being led or completely by the students. They work in the various, let's say, then women, health and hygiene. So this type of problems we are working on. But our things got changed due to the COVID. During the COVID period, when these things we were doing, but during the COVID period, what we did is we went outside the campus. When we went outside the campus, we could see the world with something is not what we see inside the campus. Inside the campus, we are really privileged. On to help these people, rather to help, not to help this, how can we solve these problems as this, not to help them. So we came up with this social entrepreneurship course.
was which the BTech students they do as their elective courses. Now this course has got a very much we have done for the 2 semesters, and we got the number of students. The number was so huge that we had to put a cap on it, like only 150 students could do or 50 students could do. First we started with 150 students, then we had to reduce as the next semester. We thought that chalo, this semester somehow they did not know it was something new. So we got that huge number. Next semester it will be getting reduced. But next semester we got many. In fact, it was approximately 400 students that enrolled for this course. So we had to put a cap on the base of their CGPA so that we can accommodate the students and we could do this course. So what this course is about, like first we were telling them what is a social entrepreneurship and how come it is different from a normal entrepreneurship. Now this social entrepreneurship is this process we have to recognize and solve just take the opportunity from the society and solve the social causes that we are having, and just to implement the technology. Like you people, like what we tell our BTech students, that you have that knowledge, you are studying in various domains. Some you may be electrical, chemical, mechanical, whatever your department is, and you are coming to this course, and now how you can solve the courses, how you can identify the problem and what will be your solution. This is not exactly a classroom course we have. We have only 1 lecture a week, and they have three lectures they have to spend in every week they have to spend in certain village. Like any village they want to go, or you can go to the law and order, you can go to whatever, not only village, you can go to any aspect of your life. Means you can go to the local administration, you can go to the hospitals, you can go to anywhere, you can go also schools, you can go anywhere, and you can just identify what problems they are having, and the best problem what will be they will bring. They must not only identify the problem, they must be coming with a solution, and the best solutions will be awarded with 1 lakh rupees so that they can start their own startups, or they can fund and they can really implement it. So now what does they, like I already told that they are shifting, like they are trying to go beyond the classroom and textbooks. They are trying to fill up the gap, like whatever or wherever they are trying to go and teach the students. Even we can tell the BTech students are trained in the digital literacy. Almost 500 school children, underprivileged school children, they are trained. And then how come to start we have their own curriculum. We have the social inventory, so that we want the social equality, and education is the best way to, we believe that this is the best way to eradicate this inequality or this kind of things. So we are doing this. Now healthcare, like just now we have told us that we need something immediately urgent. So urgently what we can organize is a health camps, free checkups camps they are organizing. And now they have came up with they came up with many ideas like mobile clinics and this kind of things. But again, sir, we know scarcity of funds do not have encouraged us to go for those kind of huge setups. But for this, we have our small camp where not only with the doctors of the local administration, with the institute doctors even, we try to go for this kind of stuff. So what they do is they organize they have developed an app so that whatever medicines we are taking from our hospitals, mainly some of medicines are unused. After what we do is, after we are cured, we throw them, we simply keep them. So what they do is, if you are having those kind of medicines, give it to us. And we will be distributing them. Then this kind of things they have. So for this, whoever is having that, so pilot project as they have made that, they have created an app, whatever app medicines will be having, they will be collecting it from their doorsteps. Like, we want to share this experience. And this kind of things. Yes, so thank you for this.
few questions. Yes, sir. I think one of the things that we need to address here is the sustainability of these courses from three perspectives. So sustainability of student interest, which is something that you have shown, which many of us are scared of experimenting with BTech students. When you said that there were increase in the number of people who are wanting such course, and you should share with us what is the trick that you played to make sure that so many people, BTech students, want to participate in such course. Second thing is that you have to tell us is Can I just... Okay, one by one. One by one. Right. So what trick we played is that we eliminated the normal classroom coaching, normal classroom teaching. We only had 1 hour of classroom teaching, and those, even the teachers, were preferably not from any IIT. They were the teachers who were working in the field. Like like about the local administration, we want to speak about what is the challenges with the policing, what is the challenging as an administrator they have to face. For this, the DC or the SP, they deliver a lecture. For this agricultural point of view, we had a talk with a professor from Agriculture University. What he was saying for the education sectors, normal person, the school, government school principal or teacher, what challenges they are facing. What they can just give us the challenges. Now what we tell them, now you have went to those places. Now you have a set of challenges. Again, teachers of these courses are telling. Now tell us that what, or rather how you can solve it, and the best solution we will be providing it. If not our best, we can give him even 2, if we find it, or 3, maximum of 1 to 3. We can provide with 1 lakh rupees as a seed fund for the startup. You can go for it. So essentially what you are saying as a faculty member is in managing this thing, and you don't have to really deliver these issue or exposure, but you can ask the government departments to come and talk about it. Yes, sir. Yeah. Yes, because if even as a faculty, I do not have. I have my classroom teaching. I have my own field expertise in AI, with drives and this kind of things. So, but the social stigma we have, the best. We are not the best person who are dealing with those problems. They are the best. Like I could take a class on the energy management. Like that's my cup of tea. I will be dealing with that thing. Right. But every like education person from education, agriculture person from agriculture, and even in the last time we did not go for even professor. We invited a farmer who is really a kisan. He was delivering his lecture in Hindi, whatever the things. So what's problem he is facing? We are doing this kind of stuff. That's a very good model. Experts unlike Sitara, where they are recruited to do this job. You are all doing your regular things in other departments, but still you are maintaining this course in some funny way, in some miraculous way. Can you share how it happened? Sir, first the credit goes to our director, who first told us that this is my idea, you have to do it. I did not know. Now if the director changes. So that's the thing. But when we went there, we even I like the center was established in 2016, but only 1 or 2 faculties were engaged with it, like the coordinators, this kind of things. But when we went there, now we are a group of 7 faculty members. So now when we went there, we saw the things, we tried to connect them with us. We saw exactly what's the problem is, like we told about in the COVID scenario, when we were just going to distribute the foods and clothes, this kind of things. We saw the real scenario. Then it struck us, no, we will be doing it. And that time we motivated, not bounded by any rules, anything. We now every day, not every day, but we devote a certain amount of time to the CSE. It's very nice. The third thing that I want you to ask is sustainability of the funding. This course goes along with the funding of at least 1 lakh from the administration. Will any administration all the time, even if the directors change? No, sir. So for this, the funding was given to us by a generous alumnus. He gave us a funding of I think 8 crores for this not for CSM,
for NVCTI. From that 8 crores of money, we have that amount of money with us now. Now we are providing this funding from that alumni thing. Thank you. IGPA as the cutoff. So my question is whether you are having high CGPA as a cutoff or low. So it is probable that those who have lower CGPA are more inclined or motivated to work in this sector than those who are at a higher end of the CGPA. So do you have a higher CGPA cutoff or low CGPA cutoff? Sir, if we keep a low CGPA as a cutoff, then students will be starting some comparison. So we have kept it higher. But we do find that the students are really interested in solving. They do come up with some innovative solutions. Might or might not work, but that's a different story. But they come up with some innovative solutions. Like we will be doing this, we will be doing that, we will miraculously be solving a problem. This is within 6 months we will be solving it. Well, better first go for the market study. Then they are trying on their level best. But somehow some 2 startups we have developed in the 2 years, and they are trying to survive on their own. Now rest the time will tell, sir. Actually, as you told that we are trying to merge technology in the development together. So for the further development of India as a whole or a human being. But my question is the IITs are thinking to collaborate with institutions like Tata Institute of Social Sciences or Azim Premji universities who are already working in development sector very good, I guess. Their development courses are very strong in terms of their theoretical work, but also in terms of their groundwork. So in some other independent organizations like Pradhan is working in the livelihood promotion. Pradhan works in the, I think MP may specifically works in Mandala district. And Azim Premji Foundation also, which works in the education sector in around 7 or 8 states of India. So are we thinking to collaborate with such institutions or such organizations, independent NGOs who are already working, already explored some kind of understanding regarding what should be done in terms of development sector, in development studies. So are IITs thinking in this direction or not? IITs, as I cannot tell about other IITs, I can tell about my IIT. So we are thinking of collaborating with many organizations. We do go and visit many companies for the funds like Saras or Vaiki Mandal, that we require funds to sustain. Not only that, even though how much funds we have, it will be perish one day. So we are doing such kind of things, but right now we are trying to do this on our own, and in the near future, this CSM, the Center of Societal Mission, hopefully it will be like Sitada what they have in IIT Bombay. We are from the next year onwards, we are the next, or hopefully from the next year we will be having our own master degree for this kind of things. So we are trying to go for such kind of things. As the things will progress, we will be trying to collaborate. We will be collaborating with many organizations, not only those organizations you have named. We will be collaborating with many organizations, and we will be doing such kind of things. I am relating again with this with you only. So the same thing, like you have mentioned many things like healthcare, education, and technology sides. Many things you aspects you have given. But how to charge students? That is the motivation for the students. What factors students will motivated to opt and then go and do the social service? So first of all, our first motivation was that this is not a normal classroom teaching you will be having. You have to go for the field visits and all. This was the first thing, like something out of the box they had. Next motivation, sir, when they went there, they saw the problems, like what problems we saw, and I got motivated. Not all, but at least our trial is not 900% will be there. At least from that 150 students, at least 15 or 20 students, if they are motivated,
by seeing the problems, by seeing the conditions, by seeing those scenarios, so they come up themselves, sir. So of those crucial things are the motivators. The problems are the motivators itself. So we do not need to go for them motivating for any extra effort we do not have. So they are motivated itself. By when so like I want to share my experience. Like we visited a basti in the COVID period, and we saw that the poverty line. People say that this much of poverty has been eradicated. This much. We went to the heart of the city, a small slum area, and we could see that the gents leap about the male members. Even the female members were not having a proper clothing on themselves. So this was a very much touching thing for us. And if you are going, then food, they do not have even proper. Many people are providing them with the food, but no one is giving them a bottle of water. So this drinking water was a main issue again for this kind of. So after seeing those things, this societal mission came into existence. So even when the students are going and seeing these much things, how much privileged they are, so those privileged things come back as a motivation to them. Like we should be giving back something to the society. And you share with that you follow. And what is the lowest grade that you give? If students are motivated, they will all perform well. No, sir, you can't give them lower grades than B. No, sir. So not every students are motivated. Like only few are motivated. Like some say many students what they do is they tell, sir, I will develop a app. This is the common solution to every problem. I will develop a app. I will develop an app for education. I will develop an app for water. I will develop an app for this. But not there. So what we do? They have to submit. We have a mid semester and an end semester. In the mid semester, they have the problem. What problem they have. They have to tell them what problem they have identified and how will they solve it. And the pilot project they have to show it in their end semester. So how much they have succeeded or how nicely they have executed their pilot project, on that they have given their fundings and the grades, both. Suppose 10 to 15 students are interested and motivated, they are doing social work and they are very good. Okay. But what is the future of that 10 to 15 students? So those 10 to 15 students who have been done, not some first of all, sir, in IIT they will be going for the money, placement. That's in any scenario. But few, apart from this few are staying with their own startups, few are trying to sustain. Like I have only 2 years. So one batch has only graduated. Next batch is still in, they are in their last year, 7th semester. So we do not know about, so at least from there, 5 students made a group. They got the startup funding and they are now working on this how they can grow the startup. And this was actually it was his interview itself, his experience we wanted to show you that how are they doing, what motivated them to do those kind of things. So at least from zero, what we is it now the present scenario is 0. From 0 at least 5. Then the numbers will be going, like as many students will be joining them, then they can come as a placement, they can provide the placement. So this will be, hopefully this will be growing in the future. But now this is the scenario. सर आपने 24 बार 100 दिनों का अनशन किया, कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के संस्थानों को शिक्षा माफियों से बचाया, सत्याग्रह करके कई लाखों वृक्ष को बचाया, राष्ट्रीय पर्यावरण संसद का आयोजन किया, नदियों को बचाने हेतु कार्य किया, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनेट परिसर में हरियाली बचाने और बढ़ाने से सबसे पहले एक मोर और 4 मोरनियां आई, तो उनका कुनबा 40 से 50 का हो गया है। वर्ष 2022 में इस परिसर में 2 बाघ भी आ गए थे। इसी
शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री शरद सिंह कुमरे जी को। और मैं अभी सुन रहा था आप लोगों को कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो हमारे नेचर को बचाने के लिए, हमारे जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी को बचाते हुए हम लोग करें। मतलब हमारे यहाँ जो सक्सेस है कि हम लोग यदि बायोडाइवर्सिटी को हम वहाँ बचा रहे वहाँ पर, और कम में हर घर में यदि पौधे हों फलदार, हर बाड़ी में जैसे व्यायामशाला होता है, गौशाला होता है, पाठशाला होता है, घर के पीछे बाड़ी, तो हेल्दी डेवलपमेंट, क्योंकि कोई भी जो विलेज होता है वो उसको हम बचाने जा रहे हैं, वहाँ का जो कल्चर है। तो जो गांव का जो बहुत स्पेशलिटी है ये, यहाँ एक तो ये जो नदी का उद्गम है यहाँ से, तो वहाँ से कंटिन्यूसली पानी आता है, अभी कम हो गया है, तो हमारा सक्सेस उस चीज़ पर होगा कि हम वहाँ पानी को बढ़ा दें, ताकि वो वहाँ यदि इतना शुद्ध पानी है, वो जैसे अभी आपने कुछ प्रयोग किया था, सर ने बताया कि कुछ केमिकल का उपयोग करके वहाँ पर अच्छा पानी दिया गांव वालों को, तो ये नेचुरली बहुत अच्छा पानी है। तो क्या है कि वी आर टारगेटिंग दिस झीली विलेज, तो यहाँ से पास में है, और उसकी स्पेशलिटी है कि वहाँ पर जो यू हर्ड अबाउट दिस भीमबेटका, सर राव सर, भीमबेटका, तो भीमबेटका के ही समकालीन जो लोग थे उस समय के, तो उनका केव्स भी है, रॉक पेंटिंग्स है वहाँ पर गिरी विलेज में, तो आज हम लोग देख सकते हैं वहाँ जाकर इफ यू टाइम। तो वहाँ पर यदि हम उसको वर्ल्ड हेरिटेज में बनाने के लिए यदि हम बात करते हैं गवर्नमेंट से, तो वहाँ एक टूरिस्ट आएंगे और उनका रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है वहाँ का गाँव का, वो बेरोजगारी तो है, बाकी लोग अपना जीविका चलाने के लिए जो लिकर बनाते हैं ट्राइबल्स और उसको बेचते हैं, तो जो ह्यूमंस हैं वो मतलब सोसाइटी ऐसे काम कर रही है कि दूसरे ह्यूमंस भी बर्बाद हो रहे हैं, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको हम बचा सकते हैं, जैसे बड़े लोग हैं वो एक लिकर ले रहे हैं, तो वी कांट स्टॉप देम, क्योंकि उनका जो बन चुका है हैबिट, तो हम वहाँ एनर्जी नहीं लगाएंगे। ऑफ कोर्स वी विल वर्क फॉर देम आल्सो, पर अभी जो बच्चे हैं, यंग हैं, उनको हम बचा लेंगे तो गैप आ जाएगा, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गिव देम गुड एजुकेशन, वहाँ पर रोजगार के साथ में एजुकेशन। और जैसे एजुकेशन भी क्या है कि अभी हमारा जो एफर्ट ऐसा हो कि गवर्नमेंट फंड करती है उनको, इफ वी प्रिपेयर दोज चिल्ड्रन फॉर नवोदय स्कूल एंड एकलव्य स्कूल, तो दीज आर द बेस्ट स्कूल्स, मतलब उनके अनुसार, तो वहाँ एडमिशन उनका हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ के बच्चे जाएंगे तो दूसरे अच्छे बच्चों के साथ पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे जाएंगे तो वो जनरेशन बदल जाएगा, फिर वो लोग अच्छे जॉब में जाएंगे, अच्छे जीवन जिएंगे, और व्हेन दे विल गेट हेल्प फ्रॉम अस, तो वो मोरल वैल्यूज को सीखेंगे, देन दे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेज। तो इस तरह का हम कंसेप्ट से काम करेंगे, बाकी हम लोग वहाँ जाएंगे गांव में और बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे। यू कैन सी दिस पिक्चर, आई हैड गॉन टू दैट स्कूल एंड आई स्टार्टेड दिस पॉलीथीन लाओ सम्मान पाओ प्रतियोगिता, bring polythene and get award, this competition I organized, and within a 15 minutes they collected lot of this polythene. So means I gave them message ki we have to save our environment. So see, their energy we have used in proper way. So I have many people like this Batham sir, he is a senior officer from bank, and he is supporting us, and many people are there in our group. I am planning to make one core committee to support you, because you are technical person, but I have many non-technical persons, so they will support you, and I already made one atmosphere in village, means you can see today ki their presence will be good and they will support us. So, and I already talked to CO, IS officer, then DFO, district forest officer, then district education officer. I told about this our event, then they will support us. Of course today I don't know how many they will come, but they will support, they will send their team. So just we want to work means by saving our environment and moral values, and we want to start our organic farming, because our aim should be, our top aim should be to save our soil for next generation. So, and I am working for other
areas also. So how much time I get, I don't know, but I'll support you. Means your this aim, your motto will be fulfilled, and I'll support you at any cost. So I have many people, and you can just see village, and we can make our planning, short-term and long-term plannings, and we can go ahead, because we have to spend much time there. So I will not take your time, because we have to go, and it is, I think, around 20 to 25 kilometers from here, and one dam is there, Kolar Dam. So before that, around 8 kilometers before that village is there. So we'll go, we'll enjoy, and just we'll interact with the villagers, and we'll interact with them. So if you want to ask any questions, so I am ready, no problem. Actually, thanks to Dr. C. Lakshmana Rao sir, and Dr. Abdesh Barbeji, Dr. Vinod Yadav ji, and Dr. Deepak Kumar ji. Their efforts means really they have done a lot. And see, I'll tell you one thing. See, if somebody is intelligent, so if he is positive, then he can make swarg in the earth. And if he is negative, then how means people they are doing, you can understand now. So means you people are very nice, because you want to do something for village. So I am always with you without any condition. So I will support you, especially I talk to Nagesh sir, Rao sir, that day we met in meeting, sir also, DG sir. So we all will work together, no problem. And means we are just targeting that in village, we will make one very good team. And I already coordinated with people. I just told them we have to work, they are ready. And whatever you will guide us, so we will go ahead. Thank you so much. Sir, video? Yeah. In a positive delivery, you saw the fellow Puerto Ricans donated about 50 times and has organized almost 90 birth mission camps. Child rights works in environmental ties are plantation drives in remote villages of Madhya Pradesh. According to Mayor Osha, Kumri has himself donated blood on 50 occasions. And has inspired others to do the same by conducting donation camps. ऐसे कई लोगों को मोटिवेट किया कि आपको मतलब पूछने की आप कैंप लग रहे हैं सर, जो पहले डरते थे सिंगल पाते हैं, क्योंकि एक भय रहता है, भय को दूर करना बहुत आवश्यक है, ताकि हम लोग पहली बार देंगे तभी तो पता चलेगा कि उसमें क्या है। हम लोग जैसे ब्लड डोनेट कराते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब जो महापुरुषों के नाम पर कराते हैं। Kumri has recorded organizing 90 blood donation camps in just 2 years. इस रक्तदान की बात कर रहा हूँ, अभियान की बात कर रहा हूँ, जो मेरे सिस्टर 2001 में सही हो गई आने वाले चलते थे और 4 आने वाले को मारा था, वो मेरा भतीजा वो भी मतलब एक्सीडेंट से वो ब्लड के कारण से डेथ हो गई, तो इन चीजों ने मुझे प्रभावित किया। Kumri first donated blood to his father at the age of 70. During the 1993 Mumbai riots, he organized his first blood donation camp for the victims. आज जरूरत है कि समाज में हम लोग जहाँ एक दूसरे का खून बहुत आसानी से मार देते हैं, वैसे में हम लोग अपना ब्लड डोनेट करके दूसरे को अपना बनाने का एक आशय है हमारा सद्भावना के लिए। Also in the marketplace, Kumri gives flowers to all donors. He also runs this eco-friendly petrol pump that works completely on solar energy. This eco-crusader also carries out plantation drives in remote villages of Madhya Pradesh, like this village in Hoshangabad where 500 trees have been planted. By donating blood to planting trees, Sharad Kumri is a man of inspiration. He has not just saved many lives by donating his blood, but he is also creating new ones by planting these trees. You can also write to the editor and share stories of honesty, color, and constructive work. You can email us at editor@alvida.com or log on to facebook.com/CNIPA. Madhya Pradesh. His dedication is an example. गांव बाकी गांवों जैसा ही लगता है, लेकिन इस गांव को कुमरे परिवार ने खास बना दिया है। साल 2001 में श्रीनगर एयरपोर्ट पर लड़ते हुए जावर काची गांव की बेटी बिंदु बाला कुमरे शहीद हुई थी।
आज उसकी मूर्ति बीच गांव में है और सभी को प्रेरणा दे रही है। बहन ने देश के लिए जान दी तो बहन की शहादत को अमर बनाने के लिए भाई ने अपने जीवन को गांव के नाम कर दिया। ये हैं शरद कुमरे, जिन्होंने मैनेजर की जॉब छोड़कर जावरकाठी गांव को आदर्श बनाने का संकल्प लिया। शरद अपनी जमा पूंजी से गांव में उपयोगी पेड़ लगाते हैं, जैसे बांस, आम, जामुन, नींबू या दूसरे फलदार वृक्ष। उनका मानना है कि इससे कुपोषण कम होगा और ग्रामीण आत्मनिर्भर बनेंगे। शरद की मेहनत का असर यह है कि अब गांव वाले भी इन कोशिशों का महत्व समझ रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर गांव के विकास में योगदान दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शरद के परिवार ने स्कूल के लिए अपनी जमीन भी दान की, जहां अब गांव के बच्चे शिक्षा पाते हैं। एक कोशिश ने देखते ही देखते गांव की सूरत बदल दी है। अभियान के अंदर जो हमने हर एक किलोमीटर में जो प्राथमिक स्कूल बनाए हुए हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव है जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे क्लब में नहीं जा सकते, तो उसको लेकर आपका क्या अप्रोच है? क्यों ना हम अपने जो गांव में ऑलरेडी स्कूल एस्टैब्लिश्ड है उसको अच्छा करें, उसमें जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करें, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द आइडिया ऑफ सेंडिंग एवरी चिल्ड्रन टू एकलव्य स्कूल और एनी अदर काइंड ऑफ मॉडल स्कूल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसा कि आपने बोला कि आपने बच्चों को पॉलिथीन कलेक्ट करने के लिए बोला कि आप इंसेंटिव कुछ दिया उन्हें इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा तुमको ये मिलेगा, इस तरीके का प्राइस मिलेगा, आप जाइए और पॉलिथीन कलेक्ट करके लेके आइए। इस तरीके का सिमिलर आइडिया कश्मीर के एक सरपंच ने भी इम्प्लीमेंट किया था, तो उन्होंने कुछ गोल्ड का कुछ कॉइन वगैरह वहाँ के जो लोग थे उनको दिया था कि जितना भी सबसे ज़्यादा कलेक्ट करके लेकर आएगा उसके कंपैरिजन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड उन्होंने दिया था। बट ये बहुत इसी तरीके का आइडिया है कि स्कूल में हमने मिड डे मील स्कीम चला रखी है कि बच्चे इसके थ्रू स्कूल में आएंगे, बट अल्टीमेटली जो प्राइमरी स्कूल है वो टर्न हो जाते हैं कि वो खाना आके केवल आते हैं खाना। इस तरीके से अगर इसी चीज़ को उससे कंपेयर करें तो इंसेंटिव देना सोल्यूशन नहीं हो सकता किसी चीज़ का, until and unless you are sensitizing people about being active or being sensitive towards their climate, their environment or their एनवायरमेंट से। तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से हम क्या देख रहे हैं डेवलपमेंट में, बिकॉज आप ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं काफी टाइम से। देखिए, दो चीजें आपने पूछा है, मैं ये बताऊंगा कि दैट इज ट्राइबल विलेज और वहाँ पर अभी जो प्रोफेसर सर बैठे अखिलेश सर और टीम, तो वहाँ ठंड के दिन है पर दे डोंट टू स्वेटर, वो नंगे पैर आए थे बच्चे, तो उनका मतलब एक तरह से जिंदगी जीना ही चुनौती बन गया है आज के दिन, और पढ़ाई तो दूर। तो मैं एकलव्य और जो नवोदय स्कूल की बात इसलिए किया कि इफ दे गेट एडमिशन इन दैट स्कूल तो उनको फ्री एजुकेशन मिल जाएगा कम से कम। पर हमारा जो एम होना चाहिए कि हम एक बेस्ट एजुकेशन हो गाँव में ही, वी शुड प्रोवाइड अवर अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, ताकि गाँव का जो है माइग्रेशन ना हो, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या शहर बन रहे हैं अपने, क्योंकि एंड वी हैव बिकम द प्रॉब्लम्स, ह्यूमन जो बीइंग है वो पृथ्वी में जो जीवन है उसके लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं। मतलब जो दूसरे जीव हैं वो अपने जो अनुशासन है, प्रकृति का जो नेचर का जो डिसिप्लिन है उसके अनुसार जीवन जीते हैं, परंतु हम ह्यूमन अपने साइंस का गलत उपयोग करके विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, और हम मतलब जो दुनिया है ये समय से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो अभी जैसे कोरोना आया, तो कोरोना जब आया तो कोरोना के टाइम में पूरे जो ह्यूमन जो सोसाइटी है वो बिल्कुल बंद हो गई अपने कमरे में, तो जो नेचर है वो हंसने लगा, है ना, नेचर वाज स्माइलिंग एट दैट टाइम। मतलब एक जो बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सी वी आर इंटेलिजेंट, तो हमने अपने स्वार्थ के कारण से दूसरे लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। तो हम ऐसा वहाँ मैंने बोला ना, बायोडाइवर्सिटी हमको डेवलप करना है वहाँ, ताकि हम ह्यूमन है तो हम जैसे दो चीजें हैं, एक कुआं में मान लीजिए शेर गिर गया या हिरण गिर गया, तो दो तरह के इंसान होंगे। एक इंसान ये होगा कि कुआं में शेर गिर गया, चलो उसका शिकार करते हैं, तो ये नेगेटिव पहलू हो गया। दूसरा ह्यूमन का एक ग्रुप ऐसा है कि अपना दिमाग लगा के उसको शेर को कैसे निकालें, हिरण को कैसे बचाएं, उनको जीवन दान कैसे दें। तो दो तरह के ह्यूमन बीइंग हो गए अपनी सोसाइटी
तो हमें जो है यहाँ इस रूम में जो बैठे हैं वो रियली बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपने देश का जो टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के लोग बैठे हैं, क्रीम ब्रेन है यहाँ आज इस रूम में। तो हम इनका सदुपयोग कैसे करें कि उस गांव को हम स्वर्ग बना दें, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो हमको क्या है कि संतुलित डेवलपमेंट करना है, तो क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का लॉस है, एक्चुअली आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज बिकॉज़ दिस इज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, पर हमारा जो सिस्टम है अनहेल्दी सिस्टम है देश का। तो वी हैव टू मेक ए हेल्दी सिस्टम, और आप यदि उसको एक आइडियल विलेज बना देंगे, मॉडल विलेज, तो मजबूरी में देश के जो कोर्सेज में शुरू हो जाएगा वो। और आपको जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ बात करेंगे कितने भी अच्छा आइडियल है, जब तक लीडर्स हमारे जो नेता हैं वो राजी नहीं होंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए हम एक मॉडल तैयार कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर बर्वे हैं, डॉक्टर विनोद यादव जी हैं, डॉक्टर दीपक कुमार जी हैं, आपके डायरेक्टर साहब हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इनका दिल अच्छा है, इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ कुछ अच्छा हो। तो बाकी हम सोशल फील्ड से हमको जो होगा, मेरा ड्यूटी था कि मैं कलेक्टर से और सीओ से, फॉरेस्ट से, एजुकेशन से मैं कोऑर्डिनेट करूँ, पुलिस से, वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आई एम देयर, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं। मेरे घर में किरण बेदी, केजरीवाल सब आते थे और मैं उस मूवमेंट को लीड भी किया मैंने। अभी भी हम लोग इधर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, एक IPS ऑफिसर हैं और ADG हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो यहीं के हैं, मैनेज के हैं, और वो जैविक खेती कर रहे हैं। तो वहाँ करीब 300 एकड़ जमीन है, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ इन्वॉल्व होइए और जो ट्राइबल विलेज हैं उनको हम लोग वहाँ जैविक खेती करें। सबसे बड़ा चीज़ कि आप हम लोग क्या है, जहरीला खाना खा रहे हैं, पॉइजनस फूड भी आ रहा है टुडे, तो उस चुनौती को हम कैसे दूर करें, क्योंकि आपको ये अनुभव होगा कि आने वाला जो समय है वो अभी बहुत सारे युद्ध होंगे। हमने इतने खतरनाक हथियार बना लिए हैं कि हम इस पृथ्वी को कई बार तबाह कर सकते हैं। तो अभी बहुत जल्दी एक वर्ल्ड वार शुरू होगा, और उससे जो है जो टेम्परेचर है जो 50-60 साल में बढ़ना चाहिए था, वो अभी 10-12-15 साल में बढ़ जाएगा। तो हमारा जो पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं वो प्लान हमको करना चाहिए कि हाउ वी कैन सेव लाइफ इन आवर अर्थ। वो चुनौती है, क्योंकि आज जैसे आप लोग खाना खा रहे हैं वो सब जहरीला खाना खा रहे हैं, कुछ समय बाद वहाँ से अनाज उत्पन्न ही नहीं होगा मिट्टी से। हम लोगों के पास गोल्ड होगा, पैसा होगा, आपको उसके बदले में खाना नहीं मिलेगा। आपके जो हम लोग कार चलाते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल के कारण से दूसरे जो बर्ड्स हैं, दूसरे जो जीव हैं, गरीब व्यक्ति है, वो परेशान होता है। आप महंगी गाड़ी चलाते हैं तो आपके जो द्वारा जो छोड़ा गया धुआं है, आप AC का उपयोग करते हैं, उसके द्वारा दूसरे जो जीव हैं वो परेशान हो रहे हैं। जबकि इस पृथ्वी में सभी का बराबर का अधिकार है, जो भी जीव है यहाँ पर। ह्यूमन का थोड़ी यहाँ रिजर्वेशन है, ये तो ह्यूमन के पास तो भगवान ने बुद्धि बनाया था कि ये दूसरों के लिए वरदान बनकर हम कभी साथ धन्य हैं। तो दैट वी हैव टू प्लान। और आपको मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अगेन कि राव साहब जो है इसको इनिशिएट कर रहे हैं, आप लोग अभी जी नागेश जी, मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं दिल से, और मैं हमेशा हूँ आप लोग के साथ में। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं खुश रहूँगा कि वो गाँव आदर्श बन जाए, और यदि देश भर में यदि लागू हो जाएगा ये चीज़ तो सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट यही होगा। दैट वी हैव टू प्लान सर। आप लोग जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, नेशनल लेवल पे जाते हैं, तो हम उस गांव को इतना अच्छा बना दें कि वो मजबूर हो सरकार कि हमारे चीज़ों को, क्योंकि यहाँ के जो बच्चों को हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बच्ची ने पूछा कि वहाँ की बेस्ट स्कूल होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, स्वाभाविक है, दे हैव राइट। तो उस तरह का हम कैसे कर सकते हैं, दैट वी हैव टू प्लान। वहाँ हम लोग हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। फिर हम वहाँ जो वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करवा दें उसको, जो रॉक पेंटिंग्स हैं, क्योंकि भीमबेटका भी ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग वहाँ पर इस तरह से करेंगे कि वहाँ पर टूरिस्ट आए, लोग सीखें, तो देश भर के लोग आपके मॉडल को देखने के लिए आएंगे वहाँ पर। तो और बाकी हमारे, मैं भी क्या है कि आई बिलीव इन डूइंग न्यू थिंग्स। मैं मतलब नॉन टेक्निकल हूँ, पर मेरे ईश्वर ने जो भी नियत दिया है, सही नियत से हम यदि साधारण बुद्धि से भी काम करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम आप सबके सपोर्ट से बिल्कुल हम आप लोगों के पीछे हैं, आप आगे बढ़िए। तो आई विल सपोर्ट यू विदाउट एनी कंडीशन। और कोई क्वेश्चन था? जी, थैंक यू सो मच। Thanks for your doing this nice initiatives and for wonderful job. एक क्वेश्चन मेरा ये है कि
जैसे आपने वो कहा कि अभी हम लोग जहरीला खाना खा रहे हैं, नो, so I also belongs to village area, so I have seen, I have to visit many times my village and nearby villages. So मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, इवन सब्जियाँ उगाने में, और धान गेहूँ जो भी ग्रेन्स हैं, पीपल आर ट्राइंग टू गेट बेनिफिट, और अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं, कैसे वो अपनी फसल को बढ़ाएंगे और कैसे उसको मार्केट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मेरा एक ये है सुझाव कहेंगे, या फिर मेरा मतलब एक ये है कि आप इसको भी कुछ मूवमेंट की तरह हम कर रहे हैं, इसके ये एक अवेयरनेस आए लोगों में कि भाई पेस्टिसाइड कम से कम यूज हो। वेरी सिंपल पर्सन, उन्होंने बोला कि मैं 20 साल से नए कपड़े नहीं खरीदा, मतलब इज लिविंग सिंपल। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता क्योंकि जबकि वो खरीद सकते हैं, उनके आवश्यकताएं कम करके हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि अभी जैसे ये चलन है कि उनको मतलब अपनी जमीन से वो ज्यादा उपज करने के लिए वो लोग जो रासायनिक खाद है उनको उपयोग करते हैं। तो हम जैसे जो जैविक खेती है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उससे ज्यादा यदि फसल हम उगाने में सफल हो गए तो फिर वो अपना चेंज करेंगे। जैसे अभी क्या होता है सर, जो महुआ होता है ना, महुआ जो शराब निकालते हैं, देसी शराब निकलता है, तो उसका उपयोग भी शराब बनाने के लिए करते हैं। तो हम उनको महुआ तो बहुत उसमें मतलब गुणकारी अलग अलग उसके उत्पादन हो सकते हैं जो हेल्थ के लिए फ्रेंडली हो सकते हैं। तो हम उससे उनको यदि ज्यादा फायदा मिल जाएगा तो वो फिर वो लोग अपना व्यवसाय कर सकेंगे। तो महुआ इज वेरी गुड, मतलब हम लोग तो आई बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटी, तो हम लोग महुआ को उबाल के भी खाते थे, भूंज कर भी खाते थे, फिर तो उससे हेल्दी रहते थे, वो पेय था। पर आज जो है लोग ज्यादा लेने लगे हैं तो उससे बीमार हो रहे हैं। और लिकर को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, उससे जो एक मोरलिटी खत्म होती है वो हमारा देश का लॉस है। तो हमें जैसे यहाँ भी मैं मैनिट में मैं बहुत बच्चों को समझाता हूँ, मैंने कई ट्रक पॉलीथीन उठाया है यहाँ मैनिट में भी सर। आई सेव ग्रीनरी और बढ़ाया भी ग्रीनरी। तो यहाँ पहले 4 मोर आए थे, 40-50 मोर हो गए पीकॉक्स। तो हम लोग क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात करें तो उसमें फिर ह्यूमन भी आता है। तो सबसे पहली चीज है कि हम मिट्टी कैसे बचाएं, क्योंकि गांव में जाएंगे तो वी हैव टू टॉक अबाउट आवर सॉइल, क्योंकि उसी से उनका जीवन जुड़ा है सर। क्योंकि भविष्य में वहां से क्रॉप नहीं होगा ना, फसल नहीं होगा, तो वी हैव टू सेव सॉइल। तो उनको उसी चीज से आइडियल विलेज मतलब बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कोई भी आइडियल विलेज हो तो उसमें आपका एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो, वहाँ के मॉरल वैल्यूज कितने अच्छे हैं वो होना चाहिए। तो बाकी लोगों में फ्रेंड ब्रदरहुड होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना हो, गुड पॉलिटिक्स हो, पॉजिटिव लोग हों, ये सब चीजें। तो इन पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। जैसे बच्चे ने बताया कि लोग कुछ लालच से आते हैं, फिर पर हम लोग बेटा अभी उनके बीच में गए थे तो देखिए हमें कुछ बहाना तो चाहिए ना बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। तो उनके बीच में जाएंगे, उनसे हम सहज हुए, वो उनसे दोस्ती किए, फिर अब वो फ्रेंडली हो गए। अब जब हम उनके लिए अच्छा काम करेंगे तो देन दे विल लिसन टू अस। यदि हम सिर्फ स्पीच देकर आ जाएंगे तो दे विल नॉट लिसन टू अस। तो हमें उनके बीच में जाना है, उनको सहज करना है। और मैं तो वहाँ नया हूँ, इसके बाद भी मैंने 2-3-4 बार जाकर 2-3 बार गए हम लोग। इसके बाद में जाकर हमने वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है कि आपको समझ में आएगा कि लोग जो है आपको सपोर्ट करेंगे। लो अब लोग खड़े हो गए। फोटो खींचेगा। सर आइए आप लोग बच्चों सभी लाइन से खड़े हो जाओ बेटा, क्लास वाइज लाइन में खड़े हो जाओ क्लास ये लग रहा है मौसम ये तो तुमने यार शर्ट
सबका मन। ऐसे ही आते रहो, भूले ना हम सबका मन। आप यहाँ आए हो, खुशियाँ हमें लाए हो, पुलकित है हम सबका मन। स्वागत है सबका यहाँ, स्वागत अभिनंदन। आप यहाँ आए हो, खुशियाँ हमें लाए हो, पुलकित है हम सबका मन। जय हिंद। आइए जल्दी हमको सबको आगे आना है, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। हमको तुमको सबको आगे आना है, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। ऐसे बड़ों के आगे लोहा मान ले, ऐसे बड़ों के आगे पुस्तक तुमसे ज्ञान ले। सागर की गहराई मन में डाल कर, ऐसे बड़ों के आगे मंजिल को बढ़ने का एक बहाना है। गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। हमको तुमको सबको आगे आना है, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। लहरें उड़ती गिरती और संभलती है, विधवे भी अपने परिधान बदलती है। मुझे जाता एक दिया तूफानों में, इसके पीछे कई मशाले जलते हैं। समय नहीं आया परिवर्तन लाया है, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। हमको तुमको सबको आगे आना है, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। कुछ जंजीरें टूटी है, कुछ शेष है, अब भी भारत माँ के बिखरे केश है। चिन्ह नहीं जाना आंसू की भीड़ है, हम पर तुम पर आस लगाए देश है। हम ना रुकेंगे, नया जमाना आया है, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। हमको तुमको सबको आगे आना है, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। हमको तुमको सबको आगे आना है, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। जय हिंद। इधर सर बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। सर है ना बेटा, इधर आइए। सर आप आइए ना। यहाँ के स्पेशली जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, जो बेटा देखो, गुरु और माता पिता ये दुनिया के ऐसी शख्सियत हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए और खुश होते हुए देखकर खुश होते हैं, है ना। बाकी भाई बहनों में तक कंपटीशन आ जाता है, तो अपने माता पिता और गुरुजनों के लिए तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। धन्यवाद देना चाहता हूँ जो क्रीम है, बड़े संस्थान हैं, वहाँ से जो प्रोफेसर्स आए हैं, स्पेशली हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं बेटा मैनिट के, उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और सर लोगों ने उनसे अप्रोच किया तो उन्होंने अपना सकारात्मक रूप दिखाया, तो ये कार्यक्रम यहाँ हुआ, तो उनके लिए जोरदार तालियां उससे स्वागत करें। दिल्ली गए हैं किसी काम से, पर हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सी लक्ष्मण राव सर, प्रोफेसर IIT से हैं, मद्रास से। मद्रास बहुत दूर है ना, चेन्नई बोलते हैं आजकल, तो सर हैं प्रोफेसर, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। इधर से कम आ रही है, इधर से तेज आ रही है ना। और प्रोफेसर डॉक्टर अभिजीत देश पांडे सर हैं, इधर पीछे पीछे। यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है सर। डॉक्टर AS हत्ती सर हैं, IIT
धनबाद से और हमारे बीच में जो डॉक्टर अखिलेश बर्वे सर हैं जो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिनेश के लिए बहुत तालियां बजाएं बेटा। डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं मैडम और डॉक्टर सुरेश रावरे सर, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बाथम साहब हैं, प्राची दीदी हैं बेटा, ये आएंगे आपके बीच में, आपको पढ़ाएंगे भविष्य में। मैडम भी डॉक्टरेट कर रही है ना। और हमारे सबसे बड़े उत्प्रेरक कुमरे साहब जो है शरद कुमार कुमरे, तो इनका जोरदार ताली से जी हैं, एमटेक कर रहे हैं, सभी लोग तालियां बजाएं। वैभव जी हैं, वैभव जी के लिए स्वागत करें। तनिष भैया हैं, तनिष भैया का स्वागत कीजिए। आदेश जी हैं, आदेश जी का स्वागत कीजिए। मैम क्या नाम बेटा आपका? सत्यम भैया का स्वागत कीजिए। पहले अच्छा, वेरी गुड। तो क्या निष्ठा ना, निष्ठा मैडम का स्वागत कीजिए। कर रहे भैया, उनका स्वागत कीजिए। इधर लाइन से, ऐसे लाइन से जाओ जाओ। पैरेलल प्रोसेस किसी आपको नहीं सर दीजिए दीजिए मैं बीच में। ओके हाँ हाँ क्लास में लेते जाओ बेटा, जल्दी जाओ, इधर से जाना, इधर से जाना।
हाँ और दो तीन इधर के बच्चों को इधर दे देते हैं। लेते जाना सर दीजिए आप दीजिए बच्चों को। हाँ एक और लाइन है। आजो 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 अच्छा लो लो बेटा लो जाओ लोअर जाओ आ जाओ ले लो बेटा ले लो यहाँ पर एक जाओ अपनी क्लास में चले जाना है ना इधर चलो बेटा हो गया मिल गया आपको Just take this snap. Banner ऊपर snap. वेलकम। आइए वेलकम। तो बहुत सारे बच्चे ना वो में देना पड़ेगा तो वेलकम। ये आधे लोग इधर आ जाओ। छोटे बच्चों को पहले छोटे बच्चों को लाइन में आ जाओ बच्चों खड़े हैं। अच्छी तरफ पढ़ो। ये 5वीं वाले इधर कैसे आ गए तीसरी में? अच्छा आ गया फिर आपके यहाँ अच्छा आपकी लाइन में लेना भैया ठीक है बच्चे ठीक है बेटा थैंक यू बोलो सर लोगों को है ना थैंक यू बोलो। कौन आरती? कहाँ है आरती रमसू? अच्छे पढ़ाई करो बढ़िया पढ़िए। अभी उसको दिलवा देंगे अपन इनाम। चलो आ जाओ पढ़ाई करना पढ़ाई करना। आरती रमसू भी बहुत कमजोर है उसको भी चक्कर आ गया वो भी चलो आते जाओ अरे यहाँ आते जाओ सर के पास जाओ आगे आते बेटा सर लोग सर आप लोग भी आइए ना अखिलेश सर को बोलिए ना आप भी आइए बेटा सर लोगों के माध्यम से भी सर के पास जाओ इधर आइए सर लोग आइए ना आपका आशीर्वाद मिलेगा बच्चों को आइए आप लोग सभी लोगों से दिलवा दो बेटा लक्ष्मी आ जाओ तुम कुमरे मैडम को बुलाओ सत्यम आइए 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 पढ़ाई इधर आइए सर ये लीजिए आप लोग भी लीजिए आओ जल्दी आओ अच्छा तो पढ़ाई करना है ना आप भी लीजिए सुनील जी आप भी आइए प्रभाकर जी आइए आप चक्कर आ रहा है स्वेटर उतार दो गर्मी में भी स्वेटर पहना है ना पानी पी लो सुपर उतार सर आप आइए ना आप आइए ना आइए तो अरे आइए आइए आ जाइए सर लाओ अरे अशोक जी अरे आओ ना कविता आ जाओ आइए आप भी दीजिए नहीं देना पड़ेगा आपका आशीर्वाद तो है
खाना नहीं खाया आवाज कम आ रही है। राजेश तुम लोग भी आ जाओ। आओ जल्दी आओ सब लोग। फिफ्थ क्लास अभी तो पता नहीं बेटा, देखते हैं क्लास 7 आप ले लो, उनको बोलो अपने साथियों को ले लो। 7 बुलाना पड़ता है। अच्छा कम आ जाओ भैया फोटो दे दो। आनंदराव सर हेलो इनको तो इनको भी दे दो। ये भैया लोग गाँव के हैं। हाँ तुम्हें आ जाओ। अजय कौन सी क्लास में? जैसे डॉक्टर बनना है नितिन इस तरफ से, नितिन इस तरफ से। और 10th क्लास में अच्छे डिवीजन से पास होगे तो फिर जब 11th क्लास में आओगे तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वो हिंदी में जीव विज्ञान है ना। फिर आप उससे 11th करना, फिर 12th करना, फिर जब 12th में आ जाओगे 12th पास कर लोगे अच्छे से, फिर उसके बाद आप और PMT की तैयारी करना। तो विशाखापट्टनम साउथ में, वहाँ से हम अभी ठंडे का मौसम बिगिन नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ नहीं, ठंडे ज़्यादा नहीं। आजे बेटा आजे तो आपका नाम बताओ। अंकित, आप क्या करना चाहते हो बेटा बड़े होकर? हाँ अरे वाह, पुलिस में जाओगे? मारता डालूंगा। कौन सी क्लास में हो? अरे आप 7th में हो? कितने परसेंट आए थे आपको 6th क्लास? తెలుగు में बोलेगा, मैं हिंदी में थोड़ा हिंदी में बोलूँगा। విశాఖపట్నం అన్న ఊరు బంగాళాఖాతం అన్న సముద్రం ఉంది. ఎంతమందికి తెలుసు సోషల్ స్టడీస్లో? समुद्र का क्या बोलते हैं? समुद्री बोलते हैं ना। सागर। समुद्र के पास शहर का नाम कुछ मालूम है? इंडिया मैप में क्या होता है? मद्रास, चेन्नई। चेन्नई अपना समुद्र बड़ा शहर चेन्नई पता नहीं हमको। भोपाल कैसा एक कैपिटल है ना मध्य प्रदेश का, అది నువ్వు నేను తెలుగులో చెప్తాను. विशाखापट्टनम, వైజాగ్. మధ్యప్రదేశ్ అన్న ఊరికి భోపాల్ ఎలాగ రాజధానో అలాగా మాకు आंध्र प्रदेश का नाम सुना है आपने? हैं? आपका मध्य प्रदेश है, उसके बगल में नीचे आंध्र प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? आपका मध्य प्रदेश का कैपिटल सिटी, बड़ा सिटी क्या है? समझ नहीं आ रहा है लेकिन भोपाल। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? हाँ, वो पहले था, अब आंध्र प्रदेश 2 हो गया, मध्य प्रदेश 2 हो गया ना। मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, ऐसा आंध्रा तेलंगाना अलग हो गया। आंध्रा का कैपिटल क्या है? अमरावती। अमरावती 20 तारीख, अरे 20th। तो ये हाफ ईयरली है या फाइनल एग्जाम है? हाफ ईयरली। फाइनल कब होगा? मार्च अप्रैल। మీరు ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే హిందీలో खेलो, पढ़ाई करो और खूब पानी पियो। ठीक है, अभी फिर आएंगे हम लोग 1 महीने बाद। ठीक है, तुम पक्का इंजीनियर बनोगे। नेता बन सकता है वैसे। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा? आना और अच्छे परसेंटेज लाना, फिर हम तुमको अपनी तरफ से इनाम दिया करेंगे। ठीक है? ठीक है। कौन सी भाषा में बोल रहे थे? नहीं, वो दोनों कौन सी भाषा में बोल रहे थे? मद्रासी नहीं, तेलुगु। हाँ, ये लोग ठीक मद्रासी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। पूरा 4-5 लैंग्वेज एक साथ मद्रासी ये बोले सब। नहीं, ये सही है। 4-5 लैंग्वेज नहीं कॉमन में, लेकिन सब आदिवासी कौन सी भाषा बोलते हो? नहीं, आप लोग आदिवासी कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, लेकिन आदिवासी में कौन सी भाषा बोलते हैं? तुम्हारा नाम क्या कैसे बोलते हैं? बताओ, हाँ? बोलो। गोंडी किसको आती है? गोंडी किसको आती है? गोंडी आती है? नहीं आती है।
बोल के बताओ। अच्छा घर में बोलो कि माँ भूख लगी है तो हाँ कैसे बोलोगे बताओ। लाग रही है भूख लाग रही है लागत है लाग रही। और बताओ हाँ ये तो बुंदेलखंडी हो गया। और बोलो कुछ मैं जा रही हूँ। मैं जाऊँ बेटे वो बोला था ना उस दिन बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। सब बोलो एक साथ। नॉलेज इज पावर। पुलिस क्या करोगे उसके लिए। मेरे पास 2 है आप इतना नहीं छोड़ना। हाँ अरे कंटिन्यू आती है लाइट ये फायदा है। किसके घर में लाइट नहीं आती है। अच्छा हाँ सबके घर में कोई ऐसा बच्चा है बहुत दूर है पहाड़ में रहता है उसके लाइट नहीं आती। और क्या आप कौन से क्लास में हो। कितने लोग कितने भोपाल गए। सब लोग भोपाल गए। ऐसा कोई है जो भोपाल नहीं देखते। अच्छा ये कितने लोग भोपाल नहीं गए हैं अब तक। भोपाल कहाँ पे। बैठो पास में है। बच्चे आ जाओ थोड़ा सा दूर है। फील्ड देख रहे हैं कोई नहीं थी। चलो सामने चलो। भोपाल की क्या विशेषता है। भोपाल क्या है। हम सब लोग बहुत भोपाल में क्या देखे घूमने के लिए गए थे भोपाल या ऐसे ही गए। लड़के भी शर्मा रहे कोई भोपाल नहीं देखा है। क्या नाम है बेटा आपका। क्या नाम है। अजय खड़े हो जाओ। बताओ भोपाल कहाँ पे है। इधर जाके तो भोपाल आया। बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। चलते जाते बेटा तुम आपका नाम क्या है। खड़े हो जाओ। क्या नाम है। अर्जुन। दिल्ली कहाँ है। ऊपर अरे भाई ऊपर है ना अपन जहाँ उससे ऊपर उत्तर दिशा नक्शे में कहाँ पर है ना। हाँ भारत क्या है नक्शा देखा है तुमने भारत का नक्शा। हाँ वहाँ पे दिल्ली दिखता है। कहाँ पे दिखता है। भोपाल से ऊपर है सबसे ऊपर में। अच्छा भारत और दिल्ली का क्या रिश्ता है। भारत देश है ना अपना। दिल्ली क्या है। तो दिल्ली क्या है। दिल्ली और भारत का क्या रिश्ता है। भारत की राजधानी कौन है। भारत की राजधानी दिल्ली है। हाँ टेबल को सब। अच्छा नौ टेबल किसको आती है। नौ का पहाड़ा किसको आता है। नौ का पहाड़ा पहाड़ बोलो। ये लो बिना आपके नाम के नाम तीन का देगा। सर के तरफ से वेरी गुड। भारत की राजधानी दिल्ली है और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। वेरी गुड।
आपने कोटेशन याद किया, दूसरे लोगों ने नॉलेज इज पावर और किसने याद किया? वेरी गुड। छोटे बच्चे आप बोलो बोलो वो बच्चे सुन हाँ बोलो बोलो बेटा। बोलो राधा। बेटा आप सभी को बहुत अच्छा इंसान बनना है ना, और खूब पढ़ाई करना है। तो सर लोग मैडम लोग सब लोग आप लोगों को मदद करेंगे, है ना। तो आप बड़े बच्चे हो, हम आपको जो सिखाएंगे ना मैडम के थ्रू, मैडम लोगों को हम व्हाट्सएप में भेज देंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या सर ने भेजा सीख के रखना। और हम आप लोग के कुछ कंपटीशन भी कराएंगे। आपने प्रॉमिस किया था पॉलीथीन फ्री विलेज, पॉलीथीन फ्री में पॉलीथीन मुक्त गाँव, है ना। तो ये तो कर सकते हो ना। और रोज जो है आपको 1-2 घंटे पढ़ाई करना है। काम के समय काम और पढ़ाई के समय है ना। तो आपको अंग्रेजी में भी सिखा देंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, सर आपसे कुछ बात करेंगे। तो पढ़ाई करके आगे क्या बनना है कौन बताएगा? पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर। आपको लड़के लोग आपको क्या बनना है? लड़के लोग आप बताओ क्या बनना है? नहीं बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर किस चीज का बनना है? क्या चीज का? कितने लोगों को डॉक्टर बनना है? इंजीनियर, इंजीनियर कितने लोग हैं? वो क्या होता है? कम हो गया। ज्यादा इंजीनियर हो गए, डिमांड नहीं। इतना नहीं बोले इंजीनियर का। कितने लोगों को टीचर बनना है? डॉक्टर कितना बनना है? तो कितने लोगों को सेना में जाना है? आर्मी, 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 फौज में। कितने लोग को अंतरिक्ष में जाना है? एस्ट्रोनॉट किसको बनना है? अंतरिक्ष में कितने लोग? चांद पे, चांद वाला। सुनो बेटा, अभी सब लोगों ने पूछा कि पंखा बना है या लाइट, वैज्ञानिकों ने बनाया, अपनी लाइफ को इजी किया है। तो आप लोगों को और आगे अपने जो नेचर को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए मतलब डेवलपमेंट तो होना चाहिए, पर आपका नेचर बचना चाहिए, है ना। तो आप लोग करेंगे ना, इंजीनियर भी बनेंगे। मैथ्स कितने लोगों को अच्छा लगता है? मैथ्स और साइंस सभी लोगों को वेरी गुड। तो आप लोग इंजीनियर भी बन सकते हैं, है ना। वेरी गुड। तो किसी को राजनीति में जाना है? भारत माता की।
हिमालय जाते हैं तो वहाँ पर पूरा पानी आता है नेचुरल, तो आपको ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है उस पानी को, इट इज़ 100% प्योर। तो ये पानी गांव से सभी लोग पानी ले जाते हैं, उधर से निकले वो पाइप लाइन देखो महिलाएं ले जा रहे हैं वहाँ पे वो पानी ले जा रहे हैं, तो वी कैन मेक इट ईजी, क्योंकि गाँव के लोग ले जाते हैं पानी। हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा एक सर एक मिनट, यहाँ से क्या है कि कंटिन्यूसली पानी बहता है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू कि हम लोग यहाँ पर एक बड़ा कुआं बन सकता है, बड़ा कुआं बन सकता है, इस पानी को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से ऊपर लिफ्ट करके उसको सभी घरों में पहुँचा सकते हैं। तो ये आप लोगों को दिमाग में मतलब लाइए कि पानी सभी, इसको हम लोग करेंगे, पानी दौड़ता है एकदम बारिश हो गया तो पानी दौड़ता है, क्योंकि हमने बहुत सारा कंक्रीट बिछा दिया है। हमको पानी को चलना सिखाना है और चलते हुए पानी को रुकना सिखाना है ना, मतलब हमको मैक्सिमम पानी पृथ्वी के अंदर इसको रिचार्ज करें, जैसे हार्वेस्टिंग होता है ना, वाटर हार्वेस्टिंग, तो अपने को दूर तक करना पड़ेगा, तब इसका, हाँ जी, उसके लिए जो अपने बच्चे हैं, जो इंजीनियर बच्चे हैं, वो लोग इसका स्टडी करें और रिपोर्ट दें कि व्हाट कैन बी डन, साइंस और टेक्नोलॉजी के सर्वेइंग को अलग होंगे। What Pandit is saying that if somebody has some mud into it, no, this is then they complicated. started. No, all that is fine. But somebody, some BTech or MTech, then they can do project here. Yeah. They can do a project. इसके अलावा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चे जो इंजीनियर बच्चे हों वो सर्वे करें, उनको अपन काम दे सकते हैं कि यहाँ का, जैसे सर ने अभी बताया, तो मैं ताकि अपन जैसे किसी उसको जो बोरिंग को अपन रिचार्ज करते हैं ना, तो उस तरह का ये बड़े एरिया को रिचार्ज करना पड़ेगा। ज़्यादा जगह का जो पानी गिरता है ना, उसको ज़मीन के अंदर उतारने के लिए क्या कर सकते हैं, दैट वी हैव टू प्लान। What you can do is find a faculty in hydrology. He may not be interested in it, but no, through him you find out students. Okay. Nagesh will guide the students and finally report to the students. This is of land resources in Delhi. IWM, Integrated Watershed Management. So they give those watershed projects. No? So we can get one of that here, then that will definitely it also create a lot of manpower employment. तो सर चाहे वो प्लांटेशन की आवश्यकता हो, चाहे हमको छोटे छोटे पोन्ड्स बनाने की आवश्यकता हो, या फिर हम लोगों को बोले कि आप यहाँ का जो पानी गिरता है तो अपने अपने हिस्से का पानी बचाओ, वाटर रिजर्वायर घर वालों को खेत में, रेगुलेशन फर्स्ट। पर सर वो तब होगा जब अपन यहाँ पर्याप्त टाइम देंगे, होना चाहिए। अपन क्या है कि जैसे आई वॉज कमिंग, तो मुझे कुछ बच्चे 4-5 मिले और बोले सर आप कल भी आना, हमको बहुत अच्छा लगा, तो मतलब वो सबसे मिलकर अच्छा लगा उनको। तो ऐसे अपन गांव वालों को यदि अपन ने अपना बना लिया तो हर चीज पैसे से नहीं होता है, वो श्रमदान से बहुत कुछ कर लेंगे। एक बार एग्री तो करें, मेंटेनेंस भी करना है ना सर, प्रोजेक्ट आया गया, अपन क्या है उनका फीलिंग आएगा ना कि भाई हमने पसीना बहाया है, तो अपन क्या है मैक्सिमम चीजें जो मशीनरी है वो तो सरकार या दूसरे लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, पर अपन श्रमदान यहाँ गाँव के लोगों को इन्वॉल्व करें तो फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे उसको। मॉडल विलेज एंड मॉडल विलेज का अपन सर एक आइडियल विलेज, मॉडल विलेज का अपन रखते हैं, आदर्श गांव का, उसका रख के फिर आप ये बोले कि पानी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, है ना, जो आएगा। और मेरा एक और सुझाव है सर मेरा, एक जो बच्चे बीजेपी गवर्नमेंट है ना, अभी तो आएगा। सुनो बेटा, मेरा एक और सुझाव है, इस गांव को इस तर्ज पर आप यदि बढ़ाते हैं सर, जैसे व्यायामशाला में जिम, जहाँ पुराने व्यायामशाला नहीं होता तो गुरु और शिष्य की परंपरा होती थी, दे विल लर्न देयर मोरल वैल्यू, ठीक है। दूसरा वहाँ व्यायामशाला जाएंगे तो दे विल रिक्वायर दूध, घी, दही, मिल्क एंड कर्ड, दिस टाइप थिंग। तो फिर वो गौ पालन के लिए जो कैटल को पालने के लिए मजबूर होंगे, मतलब मजबूर क्या, उनको आवश्यकता पड़ेगी, तो दे विल डू दैट। वो पालेंगे तो हमको क्या है कि जो देसी खाद मिलेगा, गोबर, है ना, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। और चौथा चीज सर, हर बाड़ी में जो आप मीन्स आपके जो साउथ में भी जाते हैं तो अपने घर के पीछे पूरा बगीचा रहता है, गार्डन, नर्सरी, तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स के प्लांट्स हो, फ्रूट प्लांट, ताकि नहीं मेडिसिनल भी हो और फ्रूट प्लांट भी हो, ताकि हर सीजन में गांव जाए तो उनको फल मिले।
तो उससे सर क्या है कि मॉल न्यूट्रिशन जो होता है ना वो ख़त्म होगा। उनको जो है कुछ बेच देंगे और कुछ अच्छे क्वालिटी के अपन आम के दे देंगे, अमरूद के दे देंगे, जामुन के दे देंगे। तो यहाँ लोग क्या है होता है, ये टूरिस्ट एरिया है प्लेस, इधर डैम है पास में, वहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ जैसे लोकल इनको मिलेगा, यहाँ का जो लोकल फल है तो उनका इनकम बढ़ेगा। वो लोग के जो शराब वगैरह बेचते हैं ना वो मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि उनको अपन समझाएंगे कि भाई जब आपका इनकम इससे हो रहा तो आप वो काम मत करो। आप महुआ होता है ना जो जिससे शराब निकालते हैं, तो उसका उपयोग करके उसका दूसरा प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट, तो वो अपने को करना है। अपन महुआ से अपन शराब से महंगी चीजें यदि बिकने लायक चीजें बना देंगे, बहुत वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यस, तो वही थोड़ा करना है। तो उसमें आप तो वो वही है अभी जो खुल गया ना, इसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है? वो तो सब ऐसे ही चल रहा है। यहाँ के मंदिर के लोग रहते हैं, Local people they are doing. Local people. They require an expert advice on these things. So that is where management should help. वहाँ से पानी यहाँ आता है। ये जो पाइप लाइन है ना वहाँ का झरने का, ये पाइप से जोड़े ना, इसका लेवल नीचे हो गया, ये बंद हो गया, पानी आता है। It was in function for 10 years, not 10 years. Only a single multiple. शहर को मत क्या आइए सर, लाओ आप मुझे पकड़ाओ, बनना क्या कर रहे हैं? वो अपन के सर अभी बच्चों के बीच में पहुंचे हैं, अपन बात कर रहे हैं। सर आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अरे हाँ, पॉलीथीन को ना, है ना, प्लास्टिक्स को दे दो सभी को, आइए आ जाओ। मंदिर वाला व्यू अच्छा था। अच्छा ये क्या ले लेते हैं फिर मंदिर की तरफ, क्योंकि उसमें क्या है, स्टेप है ना, बैठ सकते हैं। हाँ, बैठने के लिए जूता पहनना पड़ेगा। नहीं तो सबसे नीचे वाले पे नहीं है। आप सबसे नीचे वाले में आ जाए। He is local person here and he is doing this business, है ना, तो we can go, we can interact with him, we can talk to him. यहाँ तो होगा 250-300 का ना, अंदर भी है ना। नहीं, इधर कितना है? इधर रोड के किनारे 20-25 है। और अंदर भी 300 मकान होगा। कितने से? 300। एक अलग कैनाल है क्या सर? ये एक खेत तो किधर से आता है पानी? ये तो नदी, वो कोला डैम का कैनाल है और कुछ कैनाल है? हाँ वही पानी आता है, सेम प्लेस से फिल्टर होता है। और मिलिए तो अंदर लोग हैं, स्मार्ट तो लग रहा है। सर ये मैडम आई है, कुछ पूछ लीजिए। ये साहब लोग बाहर से आए हैं और सर आइए ना, ट्रैक्टर है हम सबके पास नहीं है, सबके पास ट्रैक्टर है, 2, 3, किसी किसी के पास है, सबके पास नहीं है ट्रैक्टर। 5-6 ट्रैक्टर है। पानी आता है यहाँ पे? पानी आप कहाँ से लाते हैं पानी? उधर मंदिर से लाते, भवन हो गया था तो उधर बर्फ निकालने से लाते हैं। अभी मंदिर का पानी बंद हो गया। अभी थोड़ा उधर से दिस इज द प्रॉब्लम। पानी कौन लाता है? नहीं लाते। तो क्यों भाई मैम, यू आर इंटरव्यू, दिस इज द प्रॉब्लम। तो कितना आपको समय लगता है, कितना सुबह में कितना जाते होगे? एक बार लाते तो 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा लग जाता है। कितना दूर होगा यहाँ से? दूर पहाड़ी से लाते ना, उधर पहाड़ी से लाते पानी उधर से इधर से भी तो लाते ना, इधर कौन सी जगह? व्हाई कांट मैन गो, यू आस्क। 2 किलोमीटर दूरी से। हाँ ऑफ कोर्स। और इसके अलावा आपके साथ में मदद कौन करता है आपकी पानी लाने में? आप अकेले लाते हो पूरे घर के लिए? मर्द क्यों नहीं जाते? वही आदमी लोग नहीं जाते, घर के आदमी लोग। कहाँ जाते हैं आप लोग?
काम पे जाते हैं तो नहीं तो शराब नहीं पीते हैं जाता। सब, शराब पीते हैं। आप कितने कभी लोग बोलते पीते नहीं हैं उन्हें कि तुम भी जाओ, मैं अकेली क्यों जाऊँ? बोलते जल्दी जाए नहीं तो फिर पानी खाली हो जाए तो जाना ही पड़ेगा। जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में और चले घर के सारे काम कौन करता है? आपको क्या लगता है कि मतलब आपको ही जाना चाहिए पानी लेने या फिर आपके पतिदेव को भी जाना चाहिए? किसी को भी जाना चाहिए। जाना चाहिए तो उतारते हैं। आपकी बेटी है, उतार दो भैया। उनको तो इलेक्शन के लिए सब आता है. Why is this not being addressed by the local MLA? I mean, who is the local MLA? And I mean, this should be raised, no, by the. These issues raised by these people only, ना कि भैया आप हमारे लिए काम करोगे तब तो हम आपको वोट देंगे. इतने एजुकेशन नहीं है. तो एजुकेशन से ही होगा ये. एजुकेशन तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा. ये बेटी इस उम्र में पानी भरेगी तो पढ़ेगी. As a representative, you can write a petition and write to the collector and पानी लेके आई अभी नहीं. इसका some representative ग्राम पंचायत का. कितना अपन लोग क्या है कि यहाँ पर You do in one village, neighboring village पूछेंगे MLA आया था भाई वो 10 years. Maybe there is no models. corruption is there ना सर. आने दो सर, काम तो चलना है ना. 100% तो नहीं. Somebody should raise the issue, no. लाते हैं ये तो फिर भी खुश है क्यों सर? 2-2 किलोमीटर से Madam, where is she? She should know. This is her women's issue. Hey, what is that thing? They come from 2 kilometers, bring water. 2 किलोमीटर. So why? This is where you require a technological solution, not a sociological solution. But you need to address this thing ना कि why she is the only responsible person for managing household. Water transport has been. हाँ, वो देखो वो लाइन डली है. लाइट कितनी देर आती है? That who cooks in your house? Who cooks in your house? वैसे आती है लाइट या जाती है? No, we have to work on a technological solution also for this. We will have to blend both the things. Social. Now, study करके और आपके यहाँ व्यवस्थाओं करने के लिए there is nobody क्या समस्याएं हैं. He is not able to do it. If we'll even He'll do it when he starts if we'll introduce such kinds any kind of technological change, यहाँ पे भी अगर हम नल लगा देंगे तो the person who will fetch the water will be the woman only. जो यहाँ से रखा के अंदर रखेगी she will be the only woman. I have the problem with this thing. Why not man? So next generation school में start करो वो. Luxury falls on women is what everybody agrees. But what is the solution? So one of the solution is bring a pipe. Bring pipe to water, which is what they do everywhere. Pipe to liquor. Here it is less compared to many other villages. He says 2 kilometers. 2 kilometers. हाँ 2-3 किलोमीटर. सही बात है. Ask this fellow about work. वो या तो रात को ड्यूटी जाते हैं. When he grows up, ask him. या तो रात को ड्यूटी जाते हैं. तुम क्यों नहीं जाते पानी भरने? ड्यूटी जाते हैं. जा रही है ना. ये तो गई थी. सर थोड़ा दुकान पे कोई नहीं था छोटा वाला थोड़ा. तू भी बात क्या के राजेश? अरे यार तो खाना तो खा के आते थोड़ा बहुत. हाँ खाना खाते. खा लिया. ये दिनेश का घर है. हाँ ये दिनेश का. दिनेश ये आप हो दिनेश ना. और 3 बहनें एक बहू है. बुलाओ सबको. दीदी लोग बुलाओ. बुलाओ मम्मी को बुलाओ. भाई. उधर देखो, कैमरा देखो. उसको पूछो. उधर देखो कैमरा के ऊपर. आपको देख रहा है. हाँ. आ गया. इस उम्र से वो भी देख रहे हैं. कैमरा कॉन्शियस है. वीडियो देखो. कैमरा छोड़ दो. वीडियो देखो भाई. नाम क्या है? इनका नाम क्या है? तीन बहनें हैं और जो सबसे बड़ी छोटी बहन थी 9th में पढ़ती थी तो उससे वहाँ पे मैंने चने वने कुछ लिए थे तो मैं पूछा कि भाई क्या करती हूँ? मैं पढ़ती हूँ. क्या यहाँ पे रहते हो? पढ़ते थे. हाँ. कौन सी क्लास में? 9th में. क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर. अरे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. अंग्रेजी आती है? कहना नहीं आती. अरे अंग्रेजी नहीं आती तो डॉक्टर कैसे बनेगी? और तब से मैंने कहा तेरे को अंग्रेजी सिखाऊंगा, इंग्लिश सिखाऊंगा. फिर यहाँ घर आया, बच्चों से सबसे मिला
बीच में उनके फादर जो थे वो स्वर्गवासी हो गए। एंड रेगुलरली मतलब कॉपी पेन पेंसिल कागज़ें मुहावरे अंग्रेजी में लिखना बोलना पढ़ना वो सब। तो ये घर को मैंने अडॉप्ट किया। कब तक? अभी 3 साल से मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ। 100, 200, 500, 600 एंड कॉपी पेन पेंसिल कंपास बॉक्स। और मैंने बोला मैंने क्या अगर यहाँ पे क्लास लगाना चाहो तो मैं 8 दिन में एक बार आ सकता हूँ विदाउट फीस, है ना। मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ सबको कि सर आप लोग जो भी है बहुत बढ़िया है। एक टैलेंटेड ब्रिलियंट पीपल्स आर हियर थ्रू आउट द कंट्री। इट इज़ ए क्रीम विच इज इट इज। ये इनकी मेहरबानी है श्रीमान। ये मतलब ग्रेट पर्सनालिटी वो तो देखा ही है, लेकिन इसके अलावा भी जो है हमारा भी हमको भी जब भी आदेश आता है ये वो सुखदेव है ना। सुखदेव क्या है साहब, 12 वर्ष की अवस्था में जब थे वेद व्यास के पुत्र सुखदेव, तो 12 वर्ष की अवस्था में जब अंदर आए तो बड़े बड़े जो संत बैठे हैं अभी अपने सब पे सब खड़े हो गए। तो एक प्रोफेसर ने पूछा 12 साल का बालक आ रहा है, आप हम सब लोग खड़े क्यों हो गए? अरे नहीं चुप रहो। वो जब सुखदेव बैठ गए तब सारे प्रोफेसर मतलब संत ऋषि महर्षि उस जमाने जो कह रहे वो फिर बैठे। क्या बात थी? कहने जितने भी यहाँ बैठे हुए सब इनकी IQ को बौद्धिक आयु को जोड़ लिया जाए उससे ज्यादा बुद्धि सुखदेव में है, इसलिए हम इनकार करते हैं। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है, जो टैलेंट है, हर एक को प्यार बांटना, उनसे मतलब सही काम में लगाना, ये आप लोग आगे ये ग्रेट जॉब है विच इज डन एंड वी आर थैंकफुल बोथ ऑफ यू। सर है एनजीओ ढूंढो। मेरा एनजीओ कहाँ से लाऊंगा मैं? राइट, वी डोंट हैव एनी सोशल कॉन्टेक्ट। वी डोंट हैव एनी सोशल कॉन्टेक्ट। सर जी मैं रत्न विशेषज्ञ हूँ सारे सेमी प्रेसियस स्टोन्स का। मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ। और वो जो बात होती है ना कि कैपिटल कहाँ से आएगी, कैपिटल एक जो फैंसी कारीगर होता है 1 लाख रुपए महीने का कारीगर होता है फैंसी कारीगर बॉम्बे में सूरत में। मैंने 2001 में वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। 10 साल पहले 11 में था VRS, मैंने 1 में लिया। उसके बाद में पत्थरों में दिमाग लगाना शुरू। लेकिन आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं। आप इतने उम्र में भी हमेशा आ जाते हैं। वहाँ सुबह आ गए थे 9 बजे 9 AM को आ गए थे तो और ये रहते उसी ये कैसे होगा वो हम भी सपोर्ट करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा क्या है कि प्रोजेक्ट बनाएंगे ना कंप्लीट। इस गांव को हमको आइडियल बनाना है, आदर्श बनाना है, मॉडल बनाना है। तो क्या क्या मॉडल विलेज के क्या क्या विशेषताएं होती हैं यहाँ से। तो वो जो ऑर्गेनिक के लिए हम करेंगे यहाँ मदद करेंगे और यहाँ करवाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उधर जो रातीबड़ एरिया है, दूसरा एरिया है हमारे मैनिट से 40 किलोमीटर दूर, उधर करीब 350 एकड़ जमीन है। वहाँ बड़े बड़े लोगों ने कुछ जो अधिकारी थे वो जमीन खरीद के रखे हैं, तो कुछ जंगल है पूरा, तो वहाँ काफ़ी पानी रुका है और वहाँ हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। हम वहाँ डेयरी का और आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो नर्सरी है, तो नर्सरी से इनकम अच्छा होता है। और फिर जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का यूनिट है वो उस तरह का हम मतलब उधर प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप लोगों को वहीं ले जाएंगे। वहाँ रिसोर्ट भी है, वहाँ मतलब वॉशरूम वगैरह सब बढ़िया, बैठने का पार्क है, लॉन वगैरह। तो जंगल के बीच में तो से लोग आए और इधर घूमने जाएं तो यहाँ पर इन लोगों के हिसाब से रोजगार क्रिएट करना। तो जब अभी लिखर की बात पे ऐड कर दूँ, रिसोर्ट्स वगैरह अगर इस टाइप का छोटे छोटे हट्स वगैरह बना दिए जाए तो मेरे ख्याल से दैट विल बी बेनिफिशियल। और आदर्श बनाने के लिए हर चीज़ में आपको हेल्थ में सोचना पड़ेगा, आपका एजुकेशन का, आपका वाटर का, आपका इलेक्ट्रिसिटी का। और जो मैंने बोला ना कि बायोडाइवर्सिटी हमको यहाँ वो करना है, मतलब यहाँ इस तरह का ग्रीनरी बढ़े कि आप मधुमक्खी पालन कर सकें, बी कीपिंग।
है ना। तो इस तरह का सोचिए आप लोग बेटा, आप लोग यंग हो, आप लोग सजेस्ट करेंगे थोड़ा अध्ययन करो क्या क्या कर सकते हैं, देन यू कैन कंसल्ट विद एक्सपर्ट्स आल्सो। तो मेरे पास में हर तरह के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे बड़े सब तरह के लोग हैं, IAS, IFS, IPS सब तरह के लोग हैं, वाइस चांसलर्स। आपको मतलब जो भारत के जो वन पुरुष है ना, जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, डू यू नो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है? आप लोग जानते हैं? आप मिले तो है? हाँ, आपके गरीब वो जादव पायंग जी हैं, ही इज फ्रॉम आसाम, और उन्होंने 1360 एकड़ का जंगल अकेले ने लगाया, अकेले ने। तो इतने बड़े मतलब लोग मतलब यहाँ आ सकते हैं हमारे, आएंगे ना कहीं खाना बन रहा है तो भीड़ लग जाए, कर सकते नहीं तो दूसरे। और आपने देखा होगा कहीं भी आप जाएंगे ट्राइबल्स लोग भीख नहीं मांगते सर, भीख नहीं मांगते वो लोग, और उनका इतना सुंदर फैमिली है कि यहाँ लड़की और लड़कों का भेदभाव ही नहीं होता है। कई जगह तो ट्राइबल्स में जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें मात्र सत्तात्मक था फैमिली, माताओं का राज था। तो वैसे ट्राइबल्स में कई जगह महिलाएं हेल्प करती हैं फैमिली। सर मैं आपको बताऊं 1 मिनट और, ये जो भिलाने और भील हैं जाते हैं, और अनमेरिड गर्ल्स एंड बॉयज जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, शेक करते हैं, बात करते हैं और सब, और फिर लड़के लड़की को, किसी को कोई लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई तो उसको एक पान ऑफर करता है वो। अगर पान लड़की ने दे दिया इसका मतलब शी इज एग्री टू रन अवे विद दैट बॉय, जिसको भगोरिया बोलते हैं। और वो फिर ये शाम हो गई और थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो वो लड़की को हाथ पकड़ता है और वो भागता जाता है। फिर लड़की बोलती है बचाओ रे हमारा छोटा भाई, मोटा भाई, भगाई ले जा रही है, वो चिल्लाती जाती है, मतलब दिखाने के लिए कल्चर, लेकिन भागती वो भी है। ये जो है ना किसी ने इसका गलत उसका वो निकाला है। नहीं गलत नहीं है, नहीं जो ये सिस्टम कस्टम है, कस्टम है, ये कस्टम बहुत रिच कस्टम है, ये इतना रिच कस्टम किसी में नहीं है। हमारा वो क्या है वो बताएंगे ना, हमें जो बताया गया और जो सिखाया गया है वहाँ तक हमें अनुमान है, जो भगोरिया होता है, भगोरिया नहीं होता, वो भंगोरिया होता है। और इसका जो होली के पहले पर्व जो होली के त्यौहार आता है ना, उसका जो भी हमारे में कल्चर के हिसाब से बाजार करना होता है, वो सामान ला के रख लेते हैं उस बाजार में। तो इस चीज़ को जो धार झाबा से ये चीज़ें काफ़ी पहले भी इस चीज़ के मुद्दे पे चला था कि जो लड़का लड़की का आपस में प्रेम प्रसंग होता वगैरह वगैरह जो भी होता था वो एक झूठ था, वहाँ पे बात उस चीज़ पर भी चर्चा हुई थी। अच्छा हाँ, आगे शादी कैसे होती है ये बताओ। शादी तो जो होता ना, शादी एक बिना लड़का लड़की के परिचय की भी होती थी पहले। अभी इस समय में लड़का लड़की परिचित होते हैं और एक दूसरे से आमना सामना मिलना भी हो जाता है और एक दूसरे को फेस टू फेस देख भी लेते। पहले जमाने में ये फेस टू फेस नहीं देखते थे। तो उसमें क्या होता था, लड़की हो गई है शादी तो हाँ, इनकी डॉटर थी सुनो इसी तरीके से हुई है। नहीं हम तो अच्छा नहीं, घर वालों की मर्जी से हुए, घर वाले ही दे रहे इनसे हैं। ये पूछिए कि लड़की वाले को कितने पैसे दिए। हमारे में लड़की वालों को उल्टे पैसे देते थे इसमें, ठीक है ना। ये कस्टम जो है रिच कस्टम, ये कल्चर है हमारा। प्राची सुन लो, मतलब लड़की वालों को पैसे देते हैं, लड़की के मदर फादर को जो समाज का एक जो सिस्टम है, जो भी मांग है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो कैपेसिटी हैसियत के हिसाब से लड़की वाले बोलते हैं इस लड़के को लड़की पसंद आई ना तो इसके मम्मी पापा को 1 लाख रुपए देना पड़ेंगे, नहीं तो शादी नहीं होगी। ठीक है, तो उनके अंदर से शायद डिमांड नहीं रहती, डिमांड नहीं रहती, डिमांड समाज के द्वारा दिया जाता है, लड़की को फोर्स किया जाता है। मतलब वो जो है कि ट्राइब में ये कल्चर है कि लड़की अगर हाँ कहेगी उसकी सहमति से ही मतलब रिश्ता होता है। ये कहना बताना चाह रहे हैं। People, those who are under-educated and they are misguided that this culture is very bad. That is why their feelings are otherwise. This is a very rich culture which is adopted by the community. Very rich. अपने होटल में भी तो यही होता है ना। अगर अपन बस्तर झाबुआ वगैरह, बस्तर और उधर वहाँ पे भी जो लड़के लड़कियों के रात भर डांस नृत्य ये होते हैं तो लड़के लड़कियाँ पसंद करते हैं वहाँ पे, और वो एक दूसरे की पसंद के बाद में शादी होती है।
तो घोटुल है वो, दैट इज रिच सिस्टम। तो मतलब आज की तारीख में डाउरी के दहेज की वजह से कई लड़कियां मर रही हैं, तो यहाँ पर तो मतलब बहुत ही रिच कस्टम है और अंडरस्टैंडिंग है। भैया तुम 1 लाख नहीं दे सकते हो तो 50,000 दे दो, ठीक है 50,000। और भी बहुत सी चीजें बच्चे नहीं जानते। इफ आई विल एक्सप्लेन दे में इरिटेट ये इसको रख ये तो सुखाया हुआ है। यू कैन कीप इट सर सूखा हुआ है क्या है इसका रोटी बनता है सर, इसका रोटी भी बनता है। सर नींद आएगा, फिर नींद आएगा। जब मेरे को पैर टूट गया था ना, इसकी रोटी बना के मेरे पिताजी बड़े भाई बांधते थे। मीठा सा रोटी बना के ऐसे भी खाते थे। गरम करके बड़ी गरम एक आध दिन वहीं लगा दो ना भट्टी मेरठ में।